सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, मुझे आपको डिस्कस करना है f5.com मतलब उनकी वेबसाइट को। जैसे आप लोग फ्रीक्वेंटली cisco.com विजिट करते हैं ना, कोशिश करो f5.com भी कभी कभी आप विजिट कर लिया करें, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। तो यू वुड बी लाइक अपडेटेड कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह। अभी अगर देखोगे आप इनका जो फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस ओवरव्यू देखोगे तो उसमें सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ऑटोमेशन, विजिबिलिटी एंड इनसाइट्स, तो यही सब चीजें हैं। आजकल हर एक वेंडर में यही चीजें आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी, ठीक है। बट सबसे पहले हम रिसोर्सेज में जाएंगे। एक रिसोर्सेज करके टैब है, देन एजुकेशन एंड देन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। यहां से एक आइडिया लेंगे कि इनके कौन कौन से सर्टिफिकेशंस होते हैं। वो जरूरी है जिससे कि यू आर अवेयर कि आपका ट्रेनिंग पाथ क्या होना चाहिए F5 टेक्नोलॉजीज में, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोगों को सिस्को वाला जो सर्टिफिकेशन पाथ है वो तो नॉलेज होगी। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे भी वैसा ही कुछ इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। लेट्स से सीए, ये सीसीएनए के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। क्या रहेगा ये? सीसीएनए के इक्विवेलेंट। फिर ये सीटीएस, सर्टिफाइड टेक्निकल स्पेशलिस्ट, ये जैसे सीसीएनपी होता है ना सिस्को में, आप इसको वैसे कंसिडर करेंगे। और ये सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट, ये आप सीसीआई से आप कंपेयर करोगे, राइट। तो जैसे वहां पे एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन होती है, वैसे यहाँ पे भी एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन होगी, राइट। अब स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको सीसीएनए टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन यहाँ पे करनी है, इसका मतलब आपको क्या बनना पड़ेगा? सीए, सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। और उसके लिए 2 एग्जाम आपको अटेम्प्ट करने होंगे और दोनों को पास करना होगा। सबसे पहले 101, ठीक है। ये जो 101 है ये आपका नेटवर्क बेसिक्स को मेनली फोकस करता है। नेटवर्क बेसिक्स, आप उसमें ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल जो भी है, हेडर्स, ये जो प्रोटोकॉल होंगे आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जैसे एचटीटीपी, एफटीपी, उनके फंक्शंस। एचटीटीपी में थोड़ा डेप्थ में जाते हैं कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल के अंदर फिर मेथड्स आ जाते हैं, रिक्वेस्ट मेथड्स, राइट, और रिस्पॉन्स कोड्स आ जाते हैं, तो दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ, है ना। एचटीटीपी वर्जन्स आ जाते हैं, एचटीटीपी वर्जन 1.0, 1.1, 1.2, सॉरी 1.2 नहीं है, 2.0 आया उसके बाद, 1.1 के बाद 2.0, और अभी 3.0 की भी बातें चल रही हैं, राइट। वही सारा कुछ आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा। राउटर, स्विच, फिर सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन क्या होता है, हैशिंग क्या होता है, पीकेआई क्या होता है, राइट। जो आपने बताया श्रुति कि आपने सर्टिफिकेट लाइक ऑपरेशंस में सर्टिफिकेट रिन्यूअल पे काफी काम किया है, तो सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, राइट। पब्लिक कीज क्या होती हैं, प्राइवेट कीज क्या होती हैं। तो ये जो 101 है दैट इज अ ब्लेंड ऑफ बेसिक्स ऑफ लाइक राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, लोड बैलेंसर का भी एक बेसिक्स यहाँ पे कवर करते हैं, लाइक व्हाट आर द लोड बैलेंसर्स। F5 के मॉड्यूल्स को भी कवर करते हैं 101 के अंदर कि कौन कौन से मॉड्यूल्स आते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको कि F5 सिर्फ लोड बैलेंसिंग में नहीं है, मतलब खाली लोड बैलेंसर नहीं बनाता है। लोड बैलेंसर इज देयर प्राइम प्रोडक्ट, ठीक है, मैं बोल सकते हैं वो, ठीक है। बट लोड बैलेंसर के अलावा जैसे डीएनएस सर्वर भी एक इनका होता है, जिसको हम डीएनएस मॉड्यूल बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे तो एक इनका फायरवॉल मॉड्यूल आता है, एक एपीएम मॉड्यूल होता है, एक्सेस पॉलिसी मैनेजर, जो कि रिमोट एक्सेस वीपीएन टाइप ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। उसके अलावा आपका एडवांस्ड वैफ आ जाता है, ठीक है। और भी काफी है जैसे एसएसएल ऑर्केस्ट्रेटर, और वो सब चीजें भी ये ऑफर करते हैं कस्टमर्स को। बट मेनली यही मॉड्यूल्स हैं। तो कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं वो भी 101 में डिस्कस हो जाते हैं। हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है, एक्टिव स्टैंड बाय तो सपोर्ट करेगा, बट उसके अलावा और क्या मेथड्स ये सपोर्ट करता है ना। कौन कौन से चेसीज आते हैं, अप्लायंसेस आते हैं, क्योंकि इसमें चेसीज भी आती हैं, अप्लायंसेस भी आते हैं, और वर्चुअल एडिशन भी सपोर्ट करता है, और क्लाउड एडिशन भी सपोर्ट करता है ये। व्हाट डज दैट मीन कि जो ये लोड बैलेंसर्स हैं आपके, आपका जो लोड बैलेंसर होता है वो आप क्लाउड में भी होस्ट कर सकते हो, वो आप ऑन प्रेम
वर्चुअलाइज भी होस्ट कर सकते हो, लाइक ऑन टॉप ऑफ ESXi या फिर KVM, राइट, या फिर आप अप्लायंस भी परचेज कर सकते हो, आप चेसिस भी परचेज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे आप परचेज कर सकते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही आप ये कवर करोगे, राइट, जैसे ही आप ये कवर करोगे उसके बाद आप ये 101 एग्जाम दे पाओगे। तो मतलब कुल मिला के बेसिक्स हम यहाँ पे कवर करते हैं। सो वंस यू आर डन विद दोस बेसिक्स देन यू कैन अटेम्प्ट दैट एग्जाम, क्योंकि 101 एग्जाम दिए बिना आप नेक्स्ट 201 दे ही नहीं सकते। यहाँ पे एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा सिस्को और F5 के बीच में। जैसे सिस्को में तो क्या है कि अभी भी अगर आपको CCI लेट्स से एनकोर देना है, कोर एग्जाम, जो कि CCI रिटन CCNP एनकोर देना है आपको, विच वर्क्स इक्वल टू CCI रिटन एग्जाम। आपने भले ही CCNA नहीं दिया, यू कैन स्टिल अटेम्प्ट दैट एग्जाम, ठीक है, आप एनकोर दे सकते हो। बट यहां ऐसा नहीं है F5 में। F5 में, राइट, आपको 101 देना ही होगा, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट 201। और 201 क्या है? ये है बिग आईपी या टीमोस एडमिनिस्ट्रेशन आता है इसमें। क्या आता है? टीमोस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। टीमोस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सबसे पहले टीमोस देखो, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जो बिग आईपीज आते हैं ना, बिग आईपी तो एक डिवाइस हो गया। अब डिवाइस है तो कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना उसका। जैसे राउटर है, राउटर क्या अपने आप में एक डिवाइस, फायरवॉल क्या है? एक डिवाइस, बट उनके ऑपरेटिंग सिस्टम तो होते ही है ना, राइट। चाहे कोई स्विच है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा, स्विच तो एक डिवाइस है। वैसे ही बिग आईपी एक डिवाइस है अपने आप में, ठीक है। बिग आईपी यहाँ पे डिवाइस है अपने आप में। वो वर्चुअल एडिशन में भी रख सकते हो आप बिग आईपी, और इनफैक्ट हमारे लैब में हम वर्चुअल एडिशन ही यूज करने वाले हैं। उसके अलावा बिग आईपी आपका क्लाउड एडिशन में भी आता है, मतलब अगर आपको AWS या Azure में होस्ट करना है तो यू कैन होस्ट दैट, या GCP वगैरह के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अप्लायंसेस परचेज करने हैं तो यू कैन परचेज अप्लायंसेस, मतलब बिग आईपीज के अप्लायंसेस भी आते हैं और चेसिस भी आती है। तो अगर आपको चेसी चाहिए, कोई हाई एंड एनवायरनमेंट है जहां पे आपको मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर आप चेसिस पे मूव कर सकते हो या चेसिस को यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। अब इस बिग आईपी के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं दैट इज कॉल्ड टीमोस, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो 201 एग्जाम है ना, इसमें हम ये टीमोस की ही बात करते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे मैनेज करना है। जैसे मान के चलो आपका iOS है, राउटर का iOS है, तो आपको आना चाहिए ना iOS को कैसे यूज करना है। भाई आपका प्रिविलेज मोड क्या हो गया, ये अपना ग्लोबल कन्फिग मोड क्या हो गया, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें सिस्को में होती है। सेम यहाँ F5 के अंदर भी वो सब मोड्स होने चाहिए, कमांड सिंटेक्सिस होने चाहिए। राउटिंग कैसे कराओगे, स्टैटिक राउट कैसे ऐड करोगे, नेट कैसे कराओगे, या डायनामिक राउटिंग कैसे कराओगे, इंटरफेसिस को आईपी कैसे दिलाओगे। यहाँ पे जैसे जूनिपर में होता है ना, जूनिपर अगर किसी ने जूनोस में काम किया हो तो उसमें पोर्ट लॉकडाउन रहता है। लाइक आपको सर्विसेज जो भी अलाउ करनी है इंटरफेस के ऊपर, वो एक्सप्लिसिटली अलाउ करनी होती है, बाय डिफॉल्ट वो कुछ अलाउ करता नहीं है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी पोर्ट लॉकडाउन का फीचर होता है, तो वहां जाकर के आपको अपनी सर्विसेज को ऑन करना होगा, तो वो सीखोगे। बैकअप लेना, बैकअप को रिस्टोर करना, हाई अवेलेबिलिटी कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। लाइक 2 बिग आईपीज हैं, 2 डब्बे हैं आपके, उनको हाई अवेलेबिलिटी लाइक एक्टिव स्टैंड बाई में कैसे डालोगे, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें किस में आ जाती है आपकी टीमोस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एंड दैट्स ऑल अबाउट 201। मतलब 201 में आप टीमोस की ही बात करते हो मैक्सिमम। अब ऐसा नहीं है कि एलटीएम का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा 201 के अंदर। एलटीएम का कंपोनेंट रहेगा। अगर एलटीएम की बात करें तो उसमें जैसे आपको पता होना चाहिए कि नोड्स क्या होते हैं, पूल्स क्या होते हैं, वर्चुअल सर्वर क्या रहेगा, वो सारा डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये एग्जाम देने के बाद, अब ये सेल्स वाला तो आप दोगे नहीं, ठीक है, किसी को देना है तो दे दो, वो उस पे मेरा फोकस नहीं रहता। तो उसके बाद आप यहाँ पे ये इनमें से एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाओगे, जैसे 301A एंड 301B। एक एलटीएम एक ऐसा मॉड्यूल है, लोकल ट्रैफिक मैनेजर, जिसको आप लोड बैलेंसर भी बोलते हो, जिसके 2 एग्जाम होंगे। ये जो स्पेशलिस्ट लेवल पे, मतलब CTS जो है, सर्टिफाइड टेक्निकल स्पेशलिस्ट, वहां पे एलटीएम एक अकेला ऐसा मॉड्यूल है जिसके 2 अलग अलग एग्जाम आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 301A
एंड 301B। बाकी सभी टेक्नोलॉजी के सिर्फ एक एक ही एग्जाम होगा। जैसे डीएनएस है, जो जिसको हम पहले जीटीएम बोलते थे, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर, तो उसका एक ही एग्जाम होता है। सेम एएसएम हो गया, एएसएम मतलब एडवांस्ड वैफ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप इसका भी एक ही एग्जाम है। फिर एपीएम हो गया, ठीक है, ये पॉलिसी मैनेजर जो रिमोट एक्सेस वीपीएन का अल्टरनेटिव है, उसका एक एग्जाम हो गया, ठीक है। बट अगर इनमें से कोई भी एक एग्जाम आपको देना है, चाहे 301A देना है या 301B या 302, 303, 304, जो मर्जी एग्जाम, तो आपको ये 201 देना ही होगा। जब तक आप ये सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, तब तक आप ये सीटीएस लेवल का कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इफ यू आर सीए विच मीन सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, देन ओनली यू कैन बुक योर सीटीएस लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो एलटीएम के केस में हमारे पास दो एग्जाम होंगे, 301A एंड 301B। 301A जो है दैट इज ऑल अबाउट डिप्लॉयमेंट, है ना, आर्किटेक्टिंग, ठीक है। ये सब किस में आएगा? 301A। 1B के अंदर आपका आता है ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड एग्जाम होगा आपका 301B। तो दो ही एग्जाम है यहाँ पे, 301A एंड 301B। ये दो एग्जाम्स हैं यहाँ पे एलटीएम के अंदर। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इस ट्रेनिंग का, वैसे ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि हमने यहाँ पे मतलब जो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, दैट इज ऑल अबाउट द एलटीएम बेस्ड ट्रेनिंग। बट मेरा जो फोकस रहता है वो थोड़ा पहले बेसिक्स को कवर करने का रहेगा, लाइक 101 मॉड्यूल को कवर करने का रहता है। फिर थोड़ा मैं आपको टीमोस एडमिनिस्ट्रेशन कराता हूँ थोड़ा सा अलग से। उसके बाद में इन दोनों के टॉपिक्स को क्लब कर देता हूँ। ऑब्वियसली जो ट्रबल शूटिंग और मॉनिटरिंग का रहेगा वो यू नो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी चीजें, उसको मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। हाँ, कुछ ट्रबल शूटिंग सिनेरियोज मैं आपको कवर कराऊंगा यहाँ पे कि ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म ट्रबल शूटिंग। स्टेप्स बताऊंगा कि क्या स्टेप्स आप ले सकते हो ट्रबल शूटिंग के टाइम पे। बट अल्टीमेटली जो एग्जाम है, एग्जाम विल डिपेंड अपॉन दैट हाउ मच ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इनटू द ट्रबल शूटिंग, ठीक है। तो ही आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम में रहोगे। आप अटेम्प्ट तो कर लोगे, बुक तो कर दोगे फीस पे करके, बट क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस के साथ ही चीजें आएंगी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को कोई कुछ यहां तक पूछना है? नहीं, ठीक है। उसके बाद आप ये दे सकते हो 401 एंड 402। जब आप ये दोनों क्लियर कर लोगे तो आप बनते हैं फिर यहाँ पे ये सीएससी, विच इज सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। बट ये ध्यान रखना, वो एग्जाम देने के लिए आपको ये सभी एग्जाम्स देने होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो लेट्स से आई सेलेक्ट 301A, ठीक है। तो 301A के लिए 101 एंड 201 ये दोनों मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है। चाहे आप 301A दो या 301B दो आप। उसके अलावा 302 दोगे तो सेम रिक्वायरमेंट है 303 के लिए भी, 304 के लिए भी। बट लेट्स से आप 401 देना चाहते हैं, तो 401 के लिए जो टोटल डिपेंडेंसी है वो आपका बिग आईपी एलटीएम, एएसएम और एपीएम। अगर आपने ये तीनों एग्जाम दिए हुए हैं तो ही आप 401 वाला एग्जाम दे सकते हो। और अगर 402 देना चाहते हो तो फिर एलटीएम प्लस जीटीएम इन दोनों का सर्टिफाइड होना मैंडेटरी है। ये इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको 401 402 देना है तो ये सारे के सारे आपको जो सीटीएस लेवल पे एग्जाम्स हैं वो सभी आपको अटेम्प्ट करने होंगे, पास करना होगा, तो ही आप यहाँ पे ये सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट बन सकते हो। सो दैट्स दैट। सो दैट्स ऑल अबाउट द सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक टर्मिनोलॉजी है, देखो पहले मैं सॉल्यूशंस की बात कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन टाइप अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए, एक्सेस ऑथराइजेशन के लिए या नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पे आपके पास क्या है? सॉल्यूशंस।
जैसे एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी की बात करोगे तो एलटीएम यहाँ पे आ जाता है, राइट। प्लस अवेलेबिलिटी के लिए फिर आपका जीटीएम भी आ जाता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए आपके पास होता है वैफ, एडवांस्ड वैफ जिसको हम बोलते हैं। एक्सेस एंड ऑथोराइजेशन के लिए होता है आपका एपीएम, राइट। और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए आपका क्या है, एएफएम, जो कि फायरवॉल मॉड्यूल होता है इसका, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट्स में जाओ आप एक बार, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स में देखोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे बिग आईपी की बात करोगे, राइट, ये बिग आईपी, या फिर चलो यहीं पे बात कर लेते हैं पहले बिग आईपी। तो बिग आईपी की अगर हम बात करें तो मैंने कहा ना, बिग आईपी एक डब्बा है। बिग आईपी का मीनिंग यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ठीक है जी IPv4 32 बिट्स का है तो ये बिग आईपी थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा आईपी होगा, नहीं। बिग आईपी इन्होंने अपने डब्बे को नाम दिया है, इनका जो डब्बा है। अभी ये वर्चुअल भी हो सकता है, ये क्लाउड में भी डिप्लॉय कर सकते हो, और ये आपका एक अप्लायंस भी हो सकता है, और ये आपका एक चेसी भी हो सकता है। बिग आईपी की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, राइट। बिग आईपी के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा दैट इज टीमॉस, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो बिग आईपी है, ठीक है, बिग आईपी और टीमॉस तो कॉमन है सबके लिए, ठीक है। अब उसके ऊपर फिर आपको कोई तो मॉड्यूल एक्टिवेट करना होगा। मतलब जैसे मान के चलो आप अपने बिग आईपी को एज ए एपीएम यूज करना चाहते हो, तो फिर एपीएम वाला जो मॉड्यूल है वो एक्टिवेट करना होगा। एक तो उसका लाइसेंस आपको लगेगा, प्लस वो मॉड्यूल आपको एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। वैसे ही एएफएम होगा, एडवांस्ड फायरवॉल मैनेजर, राइट। तो अगर आप एडवांस्ड फायरवॉल मैनेजर की बात करोगे तो ये भी एक क्या है, मॉड्यूल, राइट। तो बिग आईपी आपने परचेज किया, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही रहेगा। बात आती है लाइसेंस की, ठीक है। तो एएफएम का लाइसेंस प्लस वो मॉड्यूल एक्टिवेट करना होगा। वैसे ही आपका ये एडवांस्ड वैफ आ जाता है। नेटिंग के लिए सीजी नेट आ जाता है, जो सिर्फ नेट का काम करेगा। एसएसएल ऑर्केस्ट्रेटर का काम सिर्फ एसएसएल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का रहेगा, तो वो डेडिकेटेड डब्बे आप लगा सकते हो। हम जो यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है बिग आईपी लोकल ट्रैफिक मैनेजर एंड बिग आईपी डीएनएस। वो भी पहले तो एलटीएम ही करने वाले हैं, क्योंकि ये दिस बैच इज मेंट फॉर एलटीएम ओनली। तो आप लोकल ट्रैफिक मैनेजर सीखोगे। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो एलटीएम का ऑब्जेक्टिव रहेगा, एलटीएम सीखने का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो बिग आईपी टीमॉस यहाँ पे भी कॉमन है, बट उसके ऊपर एलटीएम का लाइसेंस प्लस वो मॉड्यूल एक्टिवेट। वैसे बता देता हूं, अगर आप एलटीएम लाइसेंस इंस्टॉल करते हो तो जो एलटीएम का मॉड्यूल है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली। बाकी सब कोई भी है वो सब आपको एक्टिवेट करने पड़ते हैं, बट बाय डिफॉल्ट अगर एलटीएम का लाइसेंस है तो वो उसका मॉड्यूल ऑलरेडी एक्टिवेटेड, मतलब बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होगा, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा टू एक्टिवेट द एलटीएम मॉड्यूल, ठीक है। बाकी ये पॉलिसी एनफोर्समेंट मैनेजर भी होता है, पेम बोल देते हैं, पीईएम, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पे बिग आईक्यू भी आता है। जैसे पनोरमा सुना होगा, पालो अल्टो में पनोरमा, या सिस्को जो एफटीडी फायरवॉल्स होते हैं उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए एफएमसी यूज करते हैं, या फिर फोर्टिगेट फायरवॉल्स के लिए फोर्टी मैनेजर यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप जो मर्जी सोल्यूशन या फायरवॉल वाला सोल्यूशन ले लो, एक तो उनका कोई तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट टाइप ऑफ आजकल हर एक वेंडर आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी बिग आईपीज को अगर आप एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से, जितने भी बिग आईपीज हैं, अब वो एलटीएम की तरह काम कर रहे हैं या जीटीएम है, व्हाटसोएवर, वी डोंट केयर, राइट। पर अगर आपके पास, लेट्स से आपके पास 200 बिग आईपीज लगे हुए हैं, अभी आप इंडिविजुअली उनको मैनेज करते हैं, बट उसकी जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, एक बिग आईक्यू जो कि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का काम करता है, राइट। तो बिग आईक्यू आप परचेज कर सकते हैं। ये भी एक आपका एक अप्लायंस भी हो सकता है, और ये वर्चुअल एडिशन भी आप डिप्लॉय कर सकते हो, क्लाउड में भी डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं इसमें। बाकी वर्चुअल एडिशन मैंने बताया ही आपको, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए आप बिग आईक्यू सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट यूज कर सकते हो। हमारे कंटेंट में नहीं है बिग आईक्यू सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, इसकी ट्रेनिंग अलग से ही होती है। हमारे कंटेंट में स्टैंड अलोन मॉड्यूल्स रहेंगे, जैसे बिग आईपी डीएनएस या बिग आईपी एलटीएम। तो पहले हम बिग आईपी एलटीएम ही करने वाले हैं, उसके बाद बिग आईपी डीएनएस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हैं आपके F5 बिग आईपी। अब अगर सिस्टम्स की बात करोगे, मतलब जो डब्बे आते हैं ना, इनके हार्डवेयर डब्बे, वो एक तो ये आती है, आर सीरीज के अप्लायंसेस आते हैं, और आर सीरीज के जो अप्लायंसेस हैं वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करने वाले हैं। मतलब इसमें इस तरह के अप्लायंसेस आते हैं कि एक ही अप्लायंस के अंदर आप मल्टीपल F5 डब्बों को इंस्टॉल करा सकते हो। जैसे दो एलटीएम, दो बिग आईपी आपने इंस्टॉल कर दिया, एक बिग आईपी को आप एज ए एलटीएम यूज कर रहे हैं, दूसरे को एज ए जीटीएम यूज कर रहे हैं, वगैरह वगैरह।
मतलब जो आर सीरीज अप्लायंसेस होते हैं ये वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। इसको आप ऐसे मान के चलो जैसे सिस्को में ईएनसीएस राउटर्स नहीं आते, और ईएनसीएस के ऊपर फिर आप वर्चुअल राउटर भी इंस्टॉल कर सकते हो या वर्चुअल फायरवॉल, तो वैसे ही ये आर सीरीज अप्लायंसेस के अंदर आप वर्चुअल बिग आईपीस इंस्टॉल कराते हो। ये अप्लायंसेस हैं प्रॉपर। आई सीरीज जो है वो एक वन अप्लायंस इज इक्वल टू वन वन बिग आईपी, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्चुअलाइजेशन वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। चेसीज में दो टाइप की चेसीज हैं। एक वेलोज आती है जो लेटेस्ट है, मैंने तो अभी तक इस पे काम किया नहीं है। वेलोज चेसी की अगर हम बात करें, पुराने जो चेसीज हैं दैट इज वेप्रियोन चेसी। वेप्रियोन चेसी को दुनिया का सबसे बड़ा एडीसी बोला गया है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एडीसी। एडीसी क्या होता है? एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। मतलब जो F5 लोड बैलेंसर्स होते हैं ना, या जो लोड बैलेंसर्स आते हैं, चाहे वो लोड बैलेंसर F5 का हो या किसी दूसरे वेंडर का हो, इन सबको हम एडीसी बोलते हैं। एडीसी एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर, ठीक है, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। अच्छा, अब ये जो लोड बैलेंसर में जो, जैसे अब हमारे राउटर स्विचेस की बात करें, फायरवॉल की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द फायरवॉल। तो फायरवॉल में कौन कौन है आपके? जैसे सिस्को हो गया, पलोल्टो हो गया, फोर्टिनेट हो गया, राइट, एंड मेनी मोर, मतलब बहुत सारे, जूनिपर एंड सो। वैसे ही लोड बैलेंसर्स में हमारे पास कौन कौन से वेंडर्स हैं? ऑब्वियसली F5 इज ऑन टॉप, मतलब F5 आज के टाइम पे टॉप पे। F5 इज द बिगेस्ट वेंडर, ठीक है। जैसे सिस्को लीड करता है ना नेटवर्क को, फायरवॉल को तो नहीं बोलूंगा कि फायरवॉल को लीड करता है, क्योंकि फायरवॉल का बिजनेस अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली उसमें फिर चेक पॉइंट, पालो अल्टो, ये सब, चेक पॉइंट भी उतना टॉप पे नहीं है जितना पालो अल्टो रहेगा या फोर्टिगेट रहेगा। उसके बाद चेक पॉइंट का नंबर आता है या बाकियों का नंबर आता है, वहां पे सिस्को होता है फिर। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नेटवर्क इक्विपमेंट्स में सिस्को लीड करता है ऑलमोस्ट, ठीक है, सभी को लीडर है वो। तो वैसे ही लोड बैलेंसर्स में F5 मार्केट लीडर है, ठीक है। दे आर द लीडर्स, मतलब most of the market is captured by the F5 when it comes to the load balancer, but they are not the only one, है ना, ये ध्यान रखना, ये अकेले नहीं है। F5 के अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो सिट्रिक्स नेट स्केलर आता है, सिट्रिक्स का, राइट, नेट स्केलर, वो भी एक लोड बैलेंसर है, ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे वही है इनफैक्ट, ठीक है। उसके अलावा एक A10 आता है, A10 भी अपने आप में एक वेंडर है। उसके अलावा आपका एरे आता है, एरे, एरे करके भी एक वेंडर है। उसके अलावा कैंप आता है, KEMP, ठीक है। और F5 ने अब तो खैर NGINX इनका अपना पार्ट हो गया है ये, बट पहले NGINX अपने आप में एक स्टैंड अलोन सोल्यूशन था, इन्होंने बाद में उसको टेक ओवर किया। ये पूरा वर्चुअलाइज्ड सोल्यूशन है अगर NGINX की बात करें तो, ठीक है। तो ये है इसमें सारी चीजें। तो अभी तक कोई मतलब क्वेश्चंस हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब अगर आप बिग आईपी सिस्टम्स में जाकर के देखोगे ना आई सीरीज के अप्लायंसेस, तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से अप्लायंसेस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये है आपका 15,000 सीरीज 2RU इसका साइज रहेगा। और कैपेबिलिटीज पे देखो अब आप, क्या है इसकी कैपेबिलिटीज, राइट। आइडियली ये सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बना है, तो आप इसको LTM की तरह भी यूज कर सकते हो, फायरवॉल की तरह भी यूज कर सकते हो। ये 28 कोर CPUs हो गए, स्टोरेज 1.6 TB, और रैम 512 GB, और ये 4 पोर्ट आपके 100 GB वाले होंगे और 8 पोर्ट आपके 40 GB वाले रहेंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद 11,000 सीरीज आती है। उसके बाद ये मिड, ये तो लार्ज एंटरप्राइज सर्विस प्रोवाइडर के लिए हो गया मेनली, है ना, मेनली सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। बट मिड मिड टू लार्ज एंटरप्राइज के लिए ये सफिशियंट होता है, जैसे 10,000 हो गया, या 5,000 सीरीज हो गई, या 7,000 सीरीज हो गई। तो इनके भी ऐसे ही आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो कि किसमें कितना कैपेसिटी है। बाकी स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 4,000 सीरीज आती है, 2,000 सीरीज आती है। ये तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, आइडियली मैंने ये 4,000 सीरीज ही देखा है। फिर ये 4,000 तो देखने को मिल जाएगा आपको, या 7,000 देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अगर अप्लायंसेस की बात करें तो ये देखने को मिल जाएगा आपको। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो आपको ये भी दिखेगा, R सीरीज के अप्लायंसेस जो कि वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये जो R सीरीज के अप्लायंसेस होंगे वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। देखो ये R सीरीज है, तो R सीरीज के काम करने का तरीका अलग होता है।
मैंने बताया ना आपको कि ये वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करेगा, राइट। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट इज F5 OS। जैसे ESXi नहीं डालते, ESXi डालते हो ना आप, जैसे VMware का ESXi होता है, सर्वर के ऊपर आप डालते हो, और ESXi के ऊपर, ESXi अपने आप में हो गया एक होस्ट VM, मतलब होस्ट हो गया वो, उसके ऊपर आप डिप्लॉय करते हो फिर आपके VMs, राइट। तो वैसे ही आर सीरीज के जो अप्लायंसेस आते हैं, ये आता है F5 OS के साथ। इसमें एक प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं F5 OS, ठीक है। और उसके ऊपर फिर आप ये बिग आईपी डिप्लॉय करते हो, ठीक है। और वैसे अगर आप बात करोगे तो बिग आईपीज में ये चेसीज भी आती है, जैसे वेप्रियन चेसी हो गई या वेलोस चेसी हो गई, ठीक है। तो ये है 4000 सीरीज चेसी आती है, एक 2000 सीरीज चेसी आती है। चेसी के अंदर ब्लेड भी लगाने पड़ते हैं, खाली चेसी से काम नहीं चलेगा, वो खाली डब्बा होगा नहीं तो, राइट। तो ये जो चेसीज है जैसे 4800 या 4480, ये चेसी हो गई, उसके अंदर जो ब्लेड लगेगा वो 4450 सीरीज का लगेगा। 4800 में जो चेसी लगते हैं वो इस चेसी के अंदर जो 4800 चेसी है ना, इसमें अप टू 8 ब्लेड लगा सकते हो आप, अप टू 8 ब्लेड, ठीक है। तो ये एक ब्लेड है, और एक ब्लेड की ये ये करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, मतलब एक सिंगल ब्लेड के ऊपर ये सारा रहेगा, आपका सीपीयू, मेमोरी, ठीक है। ऐसे आप 8 ब्लेड्स यहां पे क्लब कर सकते हो, ठीक है। और 4480 में अप टू 4 ब्लेड्स आप लगा सकते हो, अप टू 4 ब्लेड्स। वैसे जो 2000 सीरीज है 2400 हो गया, इसमें आपका अप टू 4 ब्लेड्स आप लगा पाओगे। 2200 में आपका अप टू 2 ब्लेड्स लग सकते हैं, और यही ब्लेड लगेगा इसमें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2400 चेसी में आप ये 4450 सीरीज का ब्लेड लगा दो, या 4800 चेसी के अंदर आप ये 2250 सीरीज का ब्लेड लगा दो, वो नहीं कर सकते आप। तो 4000 सीरीज के अपने ब्लेड्स आते हैं, और 2000 सीरीज की जो चेसीज है उनके अपने ब्लेड्स आते हैं, तो वो आप मिक्स नहीं कर सकते। विप्रियन चेसी के अंदर भी आपका एक जैसे ESXi टाइप ऑफ एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, और उसके ऊपर फिर आप अपने वर्चुअल बिग आईपीस इंस्टॉल कर रहे होते हो। वैसे इसमें बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं आपको विप्रियन चेसी में। इसमें कुछ इस तरीके से हम अपने बिग आईपीस को होस्ट करते हैं ना, जैसे मान के चलो मेरे पास 4 ब्लेड्स का एक चेसी है, तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे एक बिग आईपी होस्ट करेंगे तो उसको जब हम रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे ना, तो 2 अलग अलग ब्लेड से देंगे। तो इनकेस अगर एक ब्लेड फेल भी हो जाता है, एक ब्लेड पूरा पूरा का पूरा ब्लेड फेल हो जाता है, तो भी उसके पास रिसोर्सेज रहेंगे दूसरे ब्लेड वाले, और वो काम करता रहेगा। एक तो रिडेंडेंसी यहां पे मिल गई। दूसरा, एक्टिव स्टैंड बाय में कॉन्फ़िगर करोगे बिग आईपी को, तो एक चेसी के ऊपर आप एक्टिव रखोगे, दूसरी चेसी पे आप स्टैंड बाय रखोगे। सेम चेसी पे एक्टिव स्टैंड बाय दोनों मत रखना कभी भी, क्योंकि अगर चेसी पूरी डाउन होती है तो फिर तो एक्टिव स्टैंड बाय दोनों डाउन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मतलब डिजाइन आपको देखना पड़ेगा कि ठीक ठाक तरीके से डिजाइन करो, इनकेस अगर कुछ फेलियर होता है तो उसकी वजह से, मतलब देयर शुड नॉट बी ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो अगर आप एक ही चेसी के ऊपर एक्टिव स्टैंड बाय दोनों रखोगे तो फिर वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर में कंसीडर होगा। तो कोशिश करो कि 2 अलग अलग चेसीज आप रखो, और दोनों एक पे एक एक्टिव रखोगे, दूसरे पे स्टैंड बाय रखोगे। मोर ओवर आपको क्या करना है, व्हेन यू आर होस्टिंग ए बिग आईपी ऑन चेसी, तो उसमें आपको रिसोर्सेज एलोकेट करते हुए 2 अलग अलग ब्लेड यूज करना। एक सेकंड देना मेरे को प्लीज, जस्ट गिव मी अ सेक। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब बातें तो बहुत सारी करने को हैं इसमें, ठीक है, बट दिस इज हाउ यू शुड थिंक ऑफ। तो चेसी का मतलब समझ में आया होगा, डब्बा। जिन्होंने नेक्सस वगैरह पे काम किया हो, या सिस्को 4500 पे या फिर 6500 पे काम किया हो, तो या फिर आजकल अब जो आ रही है वो कैटलिस्ट 9K सीरीज, 9K में आपका 9500 है ना, तो वो सब चेसी बेस्ड स्विचेस हैं, तो देखा होगा आप लोगों ने। और खैर हो सकता है ना भी देखा हो, क्योंकि जब आप रिमोट सपोर्ट दे रहे होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि आपको फिजिकली डब्बे दिखाई दें, बस पता होता है वर्चुअली कि हाँ ये डब्बे लगे हुए हैं, यहाँ पे ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोर्ट दे रहे हो आप, बट फिजिकली कभी नहीं देखा। वैसा भी हो सकता है, बट मैंने आपको एक आइडिया दिया है यहाँ पे।
राइट। बाकी ये वेलोस जो है ये अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है, ये तो मैंने भी काम नहीं किया अभी तक, मेरे को भी नहीं मिला वेलोस पे काम करने के लिए। ये ऐसा ये भी वही है, चेसीज ही है इसमें भी। ठीक है। और ये इसमें भी आपका वेलोस के अंदर भी F5 OS आता है। वेलोस के अंदर भी क्या आता है? F5 OS। और उसके ऊपर फिर आप वो बिग आईपीस इंस्टॉल कराते हो। तो वो डेटा शीट वगैरह रीड कर सकते हो आप, इसके वाइट पेपर्स को रीड कर सकते हो। तो वो सारी चीजें, ये वाइट पेपर्स हैं इसके। तो कंपोनेंट्स देखो, F5 OS आ गया ना इसके अंदर, और फिर टेनेंट्स आप बनाओगे, टेनेंट्स में आपका बिग आईपी होगा, ये देखो। तो F5 OS आएगा ये वेलोस चेसी को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। और बस यही है इसमें, और मैंने तो खैर अभी तक इस पे काम किया नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये थोड़ा रीड कर सकते हो आप अगर चाहो तो, अगर आपको टाइम लगे। प्लस ये आपका डेटा शीट है जिसमें ये बता देगा कि क्या सीपीयू कोर्स एंड मेमोरी एंड वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये सब है यहाँ पे, देखो वेट, पावर सप्लाई, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और थ्रूपुट, ट्रैफिक प्रोसेसिंग, वर्चुअल सीपीयूज कितने हैं, प्रोसेसर्स कितने हैं, है ना। और मेमोरी, हार्ड ड्राइव कैपेसिटी, नंबर ऑफ इंटरफेसेस, 100 GB वाले भी हैं, 40 GB वाले भी हैं। राइट। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो ये निकाल सकते हो आप इसकी इंफॉर्मेशन। सो एक आइडिया लगा होगा अब आपको कि कौन कौन से टाइप के डब्बे आएंगे, बिग आईपीस आएंगे। वर्चुअल एडिशन भी रहेगा जो आप ESXi या KVM के ऊपर होस्ट कर सकते हो, और क्लाउड एडिशन भी आता है जो आप क्लाउड में होस्ट कर सकते हो। सो मैंने इसे क्लाउड, क्लाउड का मीनिंग यहाँ पे AWS या फिर माइक्रोसॉफ्ट Azure से रहेगा। तो वो चीजें हैं। खैर, इसलिए मैं आपको F5.com पे लेके गया, जिससे कि यू गेट एन आइडिया कि कौन कौन से डब्बे आते हैं इनके, और सर्टिफिकेशंस कौन कौन से हैं। तो यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन गो हेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं वापस से, वही रिसोर्सेज में जाएंगे, एजुकेशन में जाएंगे, और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में हम जाएंगे। ठीक है। तो इसमें हम 101 की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो 101 में गया मैं, और यहाँ पे होता है व्यू एग्जाम 101 स्टडी मटेरियल्स, है ना, ऑन आस्क F5। तो यहाँ पे देखो आपको ये डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो 101। तो ये जो 101 फंडामेंटल्स हैं देखो। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है वो सब दिया हुआ है इसके अंदर। इनफैक्ट आप ये ब्लूप्रिंट को डाउनलोड भी कर सकते हो। एक तो अच्छी बात ये है कि आपको पता है कौन से OS वर्जन पे एग्जाम होना है ये। ठीक है। अभी जो इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा ना, करंट वर्जन मैक्सिमम जगहों पे, वो 14 देखने को मिलेगा या 16 देखने को मिलेगा। ठीक है। बट एग्जाम्स जो हैं, सिर्फ LTM का एग्जाम 14.1 पे हो रहा है, बाकी सारे ट्रबल शूटिंग और ये सब देखोगे तो कुछ तो 11.5 पे हो रहे हैं, जो कि बहुत ही पुराना एक वर्जन हो गया। कुछ 12 पे हो रहे हैं, और कुछ 13.1 पे हो रहे हैं। तो फिलहाल जो, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, सो ये आपको यहीं से देखने को, देखने पे आपको अपडेट मिलेगा। यहाँ पे देखते रहना चाहिए आपको कि कौन सा OS वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर उस OS के अंदर कुछ नए फीचर्स हैं तो यू शुड हैव लुक्ड एट दोस फीचर्स एज वेल, इन केस अगर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो ये 101 का एक ऑफिशियल आपका ब्लूप्रिंट है, एग्जाम ब्लूप्रिंट। तो वो रीड कर सकते हो। तो एक तो वर्जन ये OS वर्जन 13.1 यूज करेगा, दैट्स वन थिंग। इसके लिए जो जो प्री रिक्विसाइट है, दैट इज नन। बट ये अपने आप में प्री रिक्विसाइट आता है किसके लिए? 201 के लिए। ठीक है। तो 201 आप तब दे पाओगे जब ये 101 दोगे। राइट। तो
दैट्स दैट। उसके अलावा ये देखो आपके सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 की अगर आप बात करोगे तो देखो यहाँ पे वीलेंस की बात हो रही है, राउटिंग की बात हो रही है, फायरवॉल स्विच क्या होते हैं, राउटर क्या होते हैं, नेटवर्क डायग्राम्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, आईपीस क्या होते हैं, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, नेट क्या होता है, IPv6 क्या होता है, ARP क्या होता है, कैसे काम करता है, मैक एड्रेस क्या होता है, आर्प कैसे मैक आर्प कैसे काम कर रहा होता है, कैसे आईपीस को मैक एड्रेस में रिजॉल्व कर रहा होता है। तो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ सेक्शन 1, राइट। उसके बाद आपका ये TTL वैल्यूज आ जाती हैं आईपी हेडर के अंदर, है ना, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद ADC एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की बस बस इसमें आपका लोड बैलेंसिंग, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंट लोड बैलेंसिंग एंड सर्वर सिलेक्शन, ठीक है। तो मतलब कौन कौन से लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स को ये सपोर्ट कर रहा होता है। उसके अलावा फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर, मैंने बताया ना आपको, ADC भी बोलते हैं लोड बैलेंसर को, ठीक है। अ, तो बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे, फीचर्स को डिस्कस करेंगे एडीसी के, मतलब लोड बैलेंसर के। फिर सेक्शन 2 में आपका आ जाता है मेनली ट्रबल शूटिंग, जिसमें कि आपको एक तो HTTP के रिस्पॉन्स कोड्स आपको पता होने चाहिए, जो इसके एरर कोड्स आते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको ARP को यूज करके, ARP टेबल देख करके कैसे ट्रबल शूट करना है वो आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि कैसे पैकेट कैप्चर लेना है आपको डेस्टिनेशन डिवाइस के ऊपर, मतलब बिग आईपी के ऊपर, और कैसे स्टैटिस्टिक्स को इंटरप्रेट करना है आपके बिग आईपी के ऊपर, तो वो सब आना चाहिए यहाँ पे। लेयर 1 कनेक्टिविटी को कैसे वैलिडेट कराओगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 का है। सेक्शन 3 में मेंटेनेंस आ जाएगा, जिसमें कि आपका ट्रैफिक ऑब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स कैसे देखोगे, कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिस्टिक्स कैसे देखोगे आप, ठीक है। सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कैसे कर सकते हो, ठीक है। और प्लेटफॉर्म को कब अपग्रेड करना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने एक अप्लायंस लिया हुआ है, तो किस सिचुएशन में आपको वो अप्लायंस अपग्रेड करके दूसरे, हो सकता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ गई हों, और जो उसका थ्रूपुट है वो ऑलमोस्ट आपने अचीव कर लिया है, तो अब अगर उसके ऊपर डेटा आएगा तो फिर देयर कैन बी ए प्रॉब्लम इन योर नेटवर्क। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस करते हो। अम, उसके बाद कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपग्रेड डाउन टाइम को, कि लेट्स से आपको ओएस अपग्रेड करना है बट डाउन टाइम को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन एप्लीकेशन क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, इंटरप्रेट ट्रैफिक ग्राफ्स, इंटरप्रेट SNMP रिजल्ट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद आपका सर्विस स्टेटस हो जाएगा कि एक्टिव क्या होता है, इनएक्टिव कैसे दिखते हैं एलिमेंट्स आपके, जैसे नोड्स, पूल्स, वर्चुअल सर्वर्स, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को, वो सब चीजें आप कैसे देखोगे, राइट, इंटरप्रेट कैसे करोगे उसको, वो सारी चीजें हैं। सिस्टम हेल्थ, ठीक है, क्यू के व्यू क्या होता है, ये डिस्क स्पेस, CPU लोड, मेमोरी बैंडविड्थ, क्या इसका जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे चेक करोगे आप। फिर यहाँ पे ये OSI मॉडल आ गया है ना नॉलेज में, सेक्शन 4, जिसमें आपका ICMP कैसे काम कर रहा होता है, OSI मॉडल में कौन कौन से मतलब लेयर्स होते हैं, उनके फंक्शंस, TLS SSL क्या होता है, VPN क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी क्या है ना, DNS एंड TP syslog SNMP क्या है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, दैट्स इट। जैसे ही आप ये सारे टॉपिक्स करोगे, बेसिक्स ही है ये सब, सबका सब, इसमें कुछ भी ऐसा एडवांस नहीं है। अब ये कवर करने के बाद अब आप ये एग्जाम दे सकते हो। इसकी फीस होगी $180 प्लस GST, और 90 मिनट्स का ये एग्जाम होगा, जिसमें कि आपको स्कोर करना होता है 245 मिनिमम, ठीक है। मिनिमम इतना स्कोर चाहिए आपको। और अगर पहली बार आप फेल होते हैं तो 15 डेज का आपका यहाँ पे वेट करने के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। सेकंड फेलियर पे 30 डेज का वेट रहेगा, थर्ड पे 45 डेज का, फोर्थ पे 365 डेज, और फिफ्थ और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स होंगे उसमें 90 डेज का मिनिमम आपको गैप रखना होगा एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले। बट इतनी बार फेल कौन होता है, और हो ही रहे हैं इतनी बार फेल, तो छोड़ दो फिर, के एग्जाम क्यों ही देना। तो ये सारी चीजें हैं, राइट। तो ये है आपका ब्लूप्रिंट 101 के लिए, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी होगी टू टू गेट योर सेल्फ सर्टिफाइड, और टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम 101, ठीक है।
रीड कर सकते हैं, हम क्यूसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो कोई ज्यादा कुछ इतने प्रॉब्लम्स रहेंगे नहीं आपको, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप इजीली एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगेन वही है कि आपने कितना डेप्थ में जाकर के जो बेसिक्स हैं वो उनको कवर किया है। तो 101 के अकॉर्डिंग अब आप लोग थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, और जो टॉपिक्स आपको आते हैं वो मुझसे स्किप करा देना, और जो नहीं आते हैं तो वो मुझे बता देना कि इनको मुझे एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, राइट। ये बताओ मेरे को, ओएसआई मॉडल, आर यू ऑल गुड विद दैट? ये जो सामने दिखा हुआ है 7 लेयर्स, है ना, और उनके फंक्शंस, ऑल गुड? यस सर। ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ये लेयर्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे बात होती है डेटा लिंक लेयर की सबसे पहले। अच्छा, फिजिकल लेयर की होती है, बट फिजिकल लेयर पे तो आप कुछ ज्यादा फोकस करोगे नहीं, राइट, क्योंकि फिजिकल लेयर पे तो वो वायरिंग केबलिंग वो सब आ जाएगी, है ना। मोस्टली हम इंजीनियर्स केबलिंग करते नहीं हैं इन मोस्ट केसेस, अनलेस वी आर ऑल्सो वर्किंग एज ए फील्ड इंजीनियर। मतलब अगर हम फील्ड इंजीनियर का काम कर रहे हैं फिर तो केबलिंग वेबलिंग का भी देखना पड़ेगा, बट अगर रिमोट ऑफिस है आपका, घर से बैठ के ऑफिस में बैठ के आप कस्टमर्स को सपोर्ट दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये सब करने की जरूरत होगी। बट अगर डेटा लिंक लेयर की बात करें, ऑब्वियसली ये तो आपका आपका काम रहेगा। तो डेटा लिंक लेयर में फिर आपका फॉरवर्डिंग डेटाबेस जैसे, है ना, वो सब बनता है ना, आपका लेयर टू मैक एड्रेस टेबल, वो सारी चीजें। फिर एआरपी टेबल का भी यहाँ पे एक रोल आ जाता है, एआरपी प्रोटोकॉल का। बट जो एआरपी प्रोटोकॉल है वो अगर आपकी डिवाइस लेयर टू डिवाइस है तो वहां पे तो एआरपी का कोई रोल रहेगा नहीं। बट जैसे आपकी मशीन है, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, या फायरवॉल हो गई, राउटर हो गया, स्विच हो गया, L3 स्विच हो गया, L3 स्विच। इनफैक्ट अगर लेयर टू स्विच है और उसके ऊपर आपने आईपी दिया, मैनेजमेंट आईपी, तो फिर मैनेजमेंट आईपी के लिए वो एआरपी काम करेगा वहां पे, फिर उस वहां पे भी एआरपी चलेगा। बट लेट्स से देयर इज अ लेयर टू स्विच एंड नो आईपी एड्रेस इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन द लेयर टू स्विच, तो फिर एआरपी का उसके ऊपर कोई रोल नहीं आएगा। एआरपी का तब तक रोल नहीं आएगा जब तक आप किसी इंटरफेस को आईपी एड्रेस एलोकेट नहीं कर देते हो, ठीक है। तो वो चीजें हैं। मैक एड्रेस पता होना चाहिए, 48 बिट्स का हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं, IGGL, है ना। और OUI, फिर उसके बाद वेंडर असाइंड। ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए वीलेन का कॉन्सेप्ट आया, राइट। तो वीलेन यूज करते हैं, कब यूज करनी है वीलेन? यू हैव मोर देन 200 डिवाइसेस ऑन योर लेन, या ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्रुप ऑफ यूजर्स नीड मोर सिक्योरिटी, तो उन ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए हम अलग अलग वीलेंस बना सकते हैं, है ना। तो यही चीजें हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वीलेंस आर यूज्ड टू 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 मेक ए सिंगल स्विच इनटू मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस। यही तो होता है कि बाय डिफॉल्ट आपका स्विच जो होता है, इथरनेट स्विच जैसे सिस्को का स्विच होता है, वो बाय डिफॉल्ट एक सिंगल स्विच है, लेकिन वर्चुअली अगर आप उसको मल्टीपल स्विचेस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट बाय क्रिएटिंग वीलेंस, राइट। तो खाली सबनेटिंग से काम क्यों नहीं चलता है भाई? सबनेटिंग से भी तो आपका ये कम्युनिकेशन या सिक्योरिटी आप ऐड करा सकते हो, बट देखो, सीधी सी बात है, लेयर 3 पे सेगमेंटेशन करनी है तो फिर आप सबनेटिंग कराओगे, लेयर 2 पे सेगमेंटेशन कराना है तो फिर वीलेन के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। दोनों टेक्नोलॉजीज अलग हैं एक दूसरे से, है ना। तो लेयर 3 पे सेगमेंटेशन के लिए सबनेटिंग हम करते हैं, और लेयर 2 पे सेगमेंटेशन के लिए हम वीलेन बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपका एक विलेन से दूसरे विलेन में नहीं जा सकता, और अगर आपको लेकर के जाना है तो उसके लिए फिर आपका, कम ऑन, मैं कहां पे आ गया, एंड पे चला गया क्या? ओ यस। हम्म। तो मैक एड्रेस, हाँ। तो लेयर 2 पे अगर ब्रेक करना है तो विलेन आप यूज करोगे, लेयर 3 पे फिर आप क्या यूज करते हैं, आपका
सबनेटिंग प्लस लेयर 2 में आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट एक विलेन का ट्रैफिक दूसरे विलेन में नहीं जाएगा, बट इन केस अगर आपको लेकर के जाना है देन यू विल हैव टू परफॉर्म इंटर विलेन राउटिंग, राइट। तो दो डिफरेंट विलेन में कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको इंटर विलेन राउटिंग करानी होगी। उसके अलावा स्विचेस के बीच में ट्रंक पोर्ट आपको कई बार कॉन्फ़िगर करने होंगे, या स्विच और बिग आईपी के बीच में भी, जैसे बिग आईपी और स्विच कनेक्टेड है और मल्टीपल विलेंस आपको यूज करने हैं बिग आईपी के ऊपर, तो फिर वो ट्रंक पोर्ट आपको बनाना होगा। ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन रियली बिल्ड ट्रंक पोर्ट और यू कैन कॉन्फ़िगर ए ट्रंक पोर्ट, वो हम भी देखेंगे। ठीक है, लिंक एग्रीगेशन भी सपोर्ट करता है ये। ठीक है, ट्रंक्स भी बोलते हैं उसको, ट्रंक्स, मैं खाली ट्रंक नहीं बोल रहा हूँ, ट्रंक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रंक्स को भी सपोर्ट करता है, ट्रंक्स मतलब लिंक एग्रीगेशन यहाँ पे, तो लिंक एग्रीगेशन को भी सपोर्ट करता है ये, राइट। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो लिंक एग्रीगेशन में सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल रहेगा, एंड दैट इज एलएसीपी, या फिर स्टैटिक ईथर चैनल भी सपोर्ट करता है, बट आइडियली हम स्टैटिक कॉन्फ़िगर करते नहीं है, क्योंकि स्टैटिक में फिर मॉनिटरिंग उतना इफेक्टिवली काम कर नहीं रही होती है, तो सामने अगर इश्यूज होते हैं तो भी वो ईथर चैनल मेंटेन करके रखेगा। बट एलएसीपी में क्योंकि नेगोशिएशन होती है तो बेटर वही है कि आप एलएसीपी यूज करो, पीएजीपी सपोर्ट नहीं करता ये। ठीक है, इस तरीके से ये ईथर चैनल, मतलब ऑब्वियसली ईथर चैनल सिस्को वाले बोलते हैं, सिस्को में हम ईथर चैनल बोलेंगे, बट बिग आईपी में हम इसको लिंक एग्रीगेशन बोलते हैं या ट्रंक्स बोलते हैं। इनफैक्ट बिग आईपी में जो इंटरफेसेस होते हैं उनको भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, या फिर 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, इस तरीके से, राइट। जैसे सिस्को में होता है ना गिग 0/0, गिग 0/1, या 0/0, 0/1/0, 0/1/2, 0/1/3 वगैरह वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे जो इंटरफेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं वो वैसे ही करते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, या 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, या 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, डिपेंड करता है। बट बंडलिंग, यस, LACP is supported, right? उफ, हम्म, तो LACP सपोर्टेड। उसके बाद नीचे आओगे तो ये फिर नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं। डेटा लिंक लेयर में तो यही करोगे ना आप, क्या करते हो, बंडलिंग। ठीक है, मैक एड्रेस टेबल आपको पता होना चाहिए, वीलेन पता होना चाहिए, तो डेटा लिंक लेयर पे तो यही सब चीजें रहती हैं, राइट, मैक एड्रेस एंड ऑल। नेटवर्क लेयर पे फिर आपका ये सब ये आईपी एड्रेस आ जाता है 32 बिट्स का, क्लासेस आ जाती हैं, क्लास A B C, है ना, DE। क्लास A B C ही यूज कर पाते हो क्योंकि D एंड E आर ऑलरेडी रिजर्व्ड, राइट। तो यही सब चीजें हैं। अब ये बताओ ये कंटेंट आपको मिला कि नहीं मिला अभी तक। बुक्स मिल गई। ठीक है, श्रुति आपको। हाँ सर। ठीक है, अभी तक क्लियर है ना, अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ आ रहा है ना कि जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है ना आप लोगों को। हाँ यस। ठीक है, गुड। तो मेरे हिसाब से आज थोड़ा ना शॉर्ट रख लेते हैं इस क्लास को, क्योंकि कपल ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन इट फ्रॉम टुमारो। आई डोंट वांट कि उनका कुछ छूटे यहाँ पे एस मच, मतलब इट्स अप टू यू, अगर आप बोलोगे कि ठीक है नहीं कंटिन्यू कर लेते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, वैसे कोई हार्ड रूल नहीं है मेरे एंड से कि एंड अभी करना है, बट इन केस इफ यू आर कंफर्टेबल देन वी कैन कंटिन्यू टुमारो, क्योंकि इसमें अभी ये मैं अब आके सबनेटिंग और ये सब चीजें रखूंगा। ठीक है, तो सबनेटिंग आप लोगों को आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ऑलरेडी आता है, नहीं आता है तो बताओ मेरे को, क्या समझूं, मतलब साइलेंस का मीनिंग, आता है सबनेटिंग। यस। ठीक है, अंशुरुति आपको, आर यू ऑल्सो कंफर्टेबल विद सबनेटिंग, या फिर एक्सप्लेन करना है मुझे। नहीं सर, आई एम कंफर्टेबल विथ। ठीक है,
तो यही क्लास ए बी सी के आईपी एड्रेसेस होते हैं, डिफॉल्ट सबनेट मास्क वैल्यूज हैं। फिर उसके बाद अगर आपको डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज नहीं करना है तो फिर आप सबनेटिंग करते हो। और सबनेटिंग में आपके दो टाइप होते हैं, एक एफएलएसएम। तो ये जो एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने, ये एफएलएसएम का एग्जांपल है, जिसमें कि हर एक ब्लॉक का जो सबनेट मास्क है वो कॉमन है ना। तो इसको हम बोलते हैं एफएलएसएम। बाकी एक होता है वीएलएसएम, जैसे कि इसके नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, कहाँ पे नो, यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे गया, ये सारा /27 वाला है। तो ये तो एफएलएसएम का एग्जांपल है, बट वीएलएसएम यूज करते हैं आज के टाइम में हम। वीएलएसएम में क्या होगा कि जितना जरूरत है सिर्फ उतना आईपीस या वो उसके अकॉर्डिंग आप सबनेट मास्क यूज करोगे। जैसे दो लिंक्स हैं, दो राउटर के बीच में, है ना, मतलब एक लिंक है इंटर राउटर लिंक। तो इंटर राउटर लिंक में सिर्फ दो ही आईपी चाहिए ना, तो उससे ज्यादा क्या करोगे आप? तो /27 लेने का मीनिंग नहीं है ना। 32 का ब्लॉक साइज है, दो आईपी यूज नहीं होंगे, बाकी 30 यूज होंगे। 30 में से दो यूज होंगे, 28 यूज नहीं होंगे, तो 28 का वेस्टेज है ना फिर। सो व्हाई शुड वी वेस्ट आर आईपीस देन? तो इसलिए वीएलएसएम यूज होता है आज के टाइम में। वीएलएसएम क्या होता है? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, राइट। तो उसमें क्या है, जितनी जरूरत, अगर /30 लेना है तो /30 लो, /24 लेना है तो 24 लो, /26 /27 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सबनेट मास्क पिक करना चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे राउट टेबल्स बनती हैं। तो राउट टेबल में आपका जो प्रीफिक्स है डायरेक्टली कनेक्टेड भी होगा, स्टैटिक राउट भी आप करा सकते हो यहाँ पे, और ये डायनामिक राउटिंग भी सपोर्ट करता है बिग आईपी। इन केस अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए ना कि ओएसपीएफ या बीजीपी इंप्लीमेंट करना है तो सपोर्ट करता है ये। वैसे रिकमेंडेड नहीं है, जैसे फायरवॉल्स के लिए आइडियली हम डायनामिक राउटिंग रिकमेंड नहीं करते, सेम बिग आईपीस के लिए भी, क्योंकि ये राउटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। बट यस, इट डज सपोर्ट OSPF BGP as a routing protocol, राइट। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स में डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की मैं बात कर रहा हूँ। तो OSPF और BGP आप इंप्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पे। बाकी लेयर 3 पे, नेटवर्क लेयर पे फ्रेगमेंटेशन भी एक कॉन्सेप्ट है, शायद आप लोग अवेयर होंगे, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन कब होती है? इफ MTU साइज इज एक्सीडेड, राइट, बाय द पैकेट लेंथ। मान के चलो आपका जो ईग्रेस इंटरफेस है जहां से आपको आईपी पैकेट सेंड करना है, उसका जो MTU साइज है दैट इज लोअर देन द साइज ऑफ द पैकेट। मतलब जो आईपी पैकेट की लेंथ है, लेट से वो 1500 है, बट एमटीयू साइज आपका 1400 है। तो फिर दो ही सोल्यूशन होंगे, या तो पैकेट ड्रॉप करेगा डिवाइस, या फिर उसको फ्रेगमेंट करेगा। फ्रेगमेंट करके मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा एंड देन इट विल सेंड इट आउट। बट जब भी आपका पैकेट लेंथ एमटीयू साइज को एक्सीड करेगा तो दो ही आपके पास ऑप्शंस होंगे। एक, या तो आप उस पैकेट को ड्रॉप कर दो, दूसरा उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में डिवाइड कर दो। सिंपल एज दैट, ठीक है। रीअसेंबलिंग हमेशा डेस्टिनेशन होस्ट करेगा, जो रिसीवर होगा, रेसिपिएंट होस्ट। एक बार अगर फ्रेगमेंटेशन हो जाती है नेटवर्क में तो रीअसेंबलिंग जो होगी वो एंड होस्ट करेगा, लास्ट वाला होस्ट एकदम। बाकी ये टीटीएल फंक्शनैलिटी है। टीटीएल फंक्शनैलिटी का जो यूज होता है वो इनडेफिनिट जो लूप्स बन जाते हैं कई बार, उसको अवॉइड करने के लिए होगा, राइट। अगर टीटीएल की बात करोगे आप तो टीटीएल इज ऑलवेज डिक्रीमेंटेड बाय 1, बट वो लेयर 3 डिवाइस ही डिक्रीमेंट करेगा। अगर लेयर 2 डिवाइस से पैकेट जाता है तो फिर तो वो लेयर 3 को ओपन ही नहीं करेगा ना, लेयर 3 हेडर को। लेयर 3 हेडर को ओपन कौन करेगा? लेयर 3 डिवाइस। अगर कोई लेयर 2 डिवाइस है तो वो खाली लेयर 2 हेडर के बेसिस पे ही ट्रैफिक को फॉरवर्ड करा देगा, तो वो लेयर 3 हेडर को ओपन ही नहीं करेगा, तो फिर कोई डिक्रीमेंट लेयर 3 पे नहीं होगा। तो लेयर 3 पे डिक्रीमेंट के लिए आपका डिवाइस लेयर 3 पे काम करते रहना चाहिए। तो होता क्या है कि व्हेनेवर ए राउटर और लेयर 3 स्विच और मे बी ए फायरवॉल रिसीव से पैकेट, इनफैक्ट बिग आईपी भी लेयर 3 डिवाइस है आपका। तो बिग आईपी को जब एक पैकेट मिलेगा, आईपी पैकेट, तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले उसका टीटीएल डिक्रीमेंट करेगा ये। सो होता क्या है, जो इनिशिएटर होगा, जिसने पैकेट को ओरिजिनली ओरिजिनेट किया होगा, वो एक टीटीएल वैल्यू लगाएगा, और वो डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं। जैसे आइडियली अगर आप यूनिक्स की बात करोगे तो वो 64 लगाता है। अगर आपका लिनक्स वगैरह है कहीं और उसने पैकेट को ओरिजिनेट किया तो 64 लगा के पैकेट जनरेट करता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हो गया तो 128 लगा के ओरिजिनेट करता है ये।
कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे भी हैं जो 256 लगा करके पैकेट को ओरिजिनेट करते हैं, मतलब ओरिजिनेटर जो होगा वो 256 लगा के भेजेगा टीटीएल वैल्यू, बट उसके बाद वो डिक्रीमेंट हो रहा होता है। और नंबर ऑफ डिक्रीमेंट होकर के, जैसे मान के चलो आपको एक पैकेट मिला टीटीएल 250 के साथ, तो इसका मतलब समझ जाओ आप कि ये इसका मतलब 255 लगाया होगा और बीच में 5 हॉप्स पड़े, इसलिए ये 250 लग करके आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो टीटीएल देख करके समझ में आ जाना चाहिए मोस्ट केसेस में आपको कि कितने हॉप अवे है आपका डेस्टिनेशन। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, मैं एक सीएमडी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। टीटीएल देखो 119, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने से जो पैकेट आ रहा है ना, रिप्लाई आ रहा है आईसीएमपी को रिप्लाई, ये इको रिप्लाई में 119 है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये 128 लगाया होगा। क्या लगाया होगा? 128। तो 9 हॉप अवे है ये www.google.com, तभी मेरे यहाँ आकर के 119 हो गया। अब वो भी देखने के लिए आप यहाँ पे कमांड डाल सकते हो tracer-d www.google.com, है ना। अगर आप ये चलाओगे तो आपको दिखेगा कि 9 हॉप्स होंगे यहाँ पे। एट हॉप्स हैं बेसिकली, तभी 119 लग करके आएगा ना। आई एम सो सॉरी, राइट। तो ठीक है, मतलब दैट्स ओके, समझ में आ रहा है ये हमें कि, तो टीटीएल को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कितने हॉप अवे है ये, कि टीटीएल इज डिक्रीमेंटेड बाय ईच एंड एवरी लेयर 3 डिवाइस ओनली। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखोगे आप कि जब एक पैकेट ट्रेवल करता है ना नेटवर्क से, मान के चलो यहाँ पे होस्ट ए से एक पैकेट गया होस्ट बी पे, तो बीच में जो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपीस होंगे ना आईपी पैकेट के अंदर, वो हमेशा सेम रहने वाला है। सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी वो सेम ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा कभी भी, अनलेस देयर इज ए नेट। अगर नेट करा दिया कहीं किसी डिवाइस पे, राउटर के ऊपर, लेयर 3 डिवाइस पे या फायरवॉल पे नेट करा दिया, तो फिर ठीक है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी भी आपका चेंज हो सकता है, नहीं तो सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी आपका हमेशा सेम रहने वाला है। बट अगर आप मैक एड्रेस की बात करोगे, तो मैक एड्रेस विल ऑलवेज गेट मॉडिफाइड। आवाज आ रही है ना मेरी आप सभी लोगों को? जैसे होस्ट ए से राउटर ए पे, मतलब ऑब्वियसली होस्ट ए से होस्ट बी को आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट। तो जो सोर्स मैक एड्रेस होगा वो होस्ट ए का होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन में गेटवे का होगा, गेटवे इज राउटर ए। ठीक है, बट सोर्स आईपी होस्ट ए का रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी होस्ट बी का रहेगा। फिर वो फ्रेम किसको आएगा? राउटर ए को। राउटर ए फ्रेम को डिकैप्सुलेट करेगा, देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरे मैक एड्रेस से मैच कर रहा है, ओके आई विल एक्सेप्ट दिस फ्रेम। फिर उसके बाद वो लेयर 3 इंफॉर्मेशन को ओपन करेगा, लुकअप करेगा राउटिंग टेबल में, देखेगा ये मेरा इग्रेस इंटरफेस है, मतलब मुझे राउटर बी को देना है डेटा। तो अब जो मैक एड्रेस लगेगा ना, वापस से इथरनेट हेडर लगेगा वापस से, तो उसमें सोर्स मैक एड्रेस राउटर ए के इग्रेस इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस राउटर बी के इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा, और फिर से वो एआरपी प्रोसेस होगा वहां पे, और राउटर बी को पैकेट मिल जाएगा। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो बेसिकली आपका सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक चेंज हो रहा है, आईपी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप देखोगे आई मैक एड्रेस सोर्स होस्ट ए, डेस्टिनेशन डिफॉल्ट गेटवे राउटर ए, आईपी होस्ट ए होस्ट बी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। उसके बाद जब दूसरे होस्ट पे गए आप, तो सोर्स मैक एड्रेस क्या हो गया? राउटर ए का इग्रेस इंटरफेस, और डेस्टिनेशन मैक क्या हो गया? राउटर बी का मैक एड्रेस, जबकि आईपी सेम है। तो थ्रू आउट आप देखोगे कि मैक एड्रेस चेंज हो रहा है। तो होता क्या है कि जब भी आपका पैकेट एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में जाएगा, तो उसका मैक एड्रेस हमेशा चेंज होगा, बट आईपीज विल रिमेन सेम अनलेस देयर इज ए नेट। ठीक है, बाकी IPv6 भी यूज करते हैं आज के टाइम में हम। IPv6 के साथ कितनी फैमिलियरिटी है आप लोगों की, मतलब हाउ कंफर्टेबल यू आर विद IPv6? रियल टाइम में यूज नहीं किया, बट आइडियाज तो होंगे ना। आइडियाज। श्रुति, आपको हाउ कंफर्टेबल यू आर? नहीं सर, नॉट कंफर्टेबल, मतलब नहीं, इतना ज्यादा नहीं किया उस पर। अच्छा, IPv6 पे कभी काम किया ही नहीं है आपने? नहीं। अच्छा, ठीक है, तो मतलब हमें देखना पड़ेगा ये, राइट। वी हैड a discussion around the big IPs, like in big IPs we have virtual edition, then we had cloud edition, then we had appliances, then we had chassis, right? So we had a discussion about them, and then um,
for chassis, then I shared the information around the blades, that for chassis you would require some blades. So we had a couple of chassis where you could add like up to 8 blades, and also we had chassis where you could add up to like 4 blades and then 2 blades as well. Now I discussed, I mean at the same time I also discussed the advantages, right, of deploying the big IP on top of the Viprion chassis, or maybe nowadays F5 has not replaced, basically they are replacing slowly their Viprion chassis with Veloz. Veloz chassis are the most latest chassis that they have launched. So Veloz, if I'm not wrong, Veloz were launched, I believe, probably 6 months back or 8 months back only. Those are not much old, right? So earlier we used to have only Viprion chassis, but now we have two different options when it comes to chassis, Viprion and then Veloz. And slowly Viprions will go away, right? And then we talked about the appliances. Then we had two different types of appliances. One which supports the virtualization, which was like R series of appliances. And then we had the normal appliances, the physical boxes, which were like I series of appliances that we discussed yesterday, right? Also, we went through that, okay, how much CPU, how many CPU cores, and then how much memory, how much of storage is available on which type of appliance. And then we could read their white papers and, all the information related to that box. So F5 has basically divided their appliances into three different categories. One is small to medium enterprises, then medium to large enterprises, and then large enterprises and service providers, right? So they have categorized their big IPs, I would say, their devices into three different categories, right? Like they have divided them based on the requirements. So they categorized big IPs based on type of the customer. So yeah, I mean, if you see that there is a large customer, large enterprise customer, right, or maybe there is a service provider, then you should go for those series of appliances or chassis only. So that's what we discussed yesterday, right? I'll be discussing about the big IP deployment or big IP, initializing the big IPs and all that. I'll be discussing that even later, maybe in next weekend, or maybe, I mean, we still have something left related to the big IPs, like, okay, it will have a LCD panel, and then it will have your control buttons, and then it will have console port, and then USB port, and then, so all those different types of ports available on the big IPs, then how you can utilize them. So that's all we are going to, we still have to discuss. So that is still left, but at higher level, then we had a small discussion around the different modules that F5 supports. So as I told that F5 does not only provide you the load balancing solution, but also apart from load balancing, it provides you many other solutions, other types of solutions, especially when it comes to security. Then it has three different solutions out there. One, it has obviously advanced WAF, and then it has ASM. Sorry, obviously that's the same thing. So they have advanced WAF, then they have advanced firewall, and then they have the policy manager, right? APM, right? So which works for providing the remote access to your applications, to your end users, right? So these all things are there, right? Then apart from that, there are many other modules, like obviously we are going to cover the LTM and GTM, so we don't have anything to do with the security modules, right? But yes, if somebody is pretty much comfortable with security, they can easily learn this load balancing technique or load balancers as well. Because even if you are covering the LTM, there are many things which are related to the security itself, such as SSL decryption. So ideally, SSL decryption is done on the firewalls or proxies, right? But here on load balancers, you will be doing so. So that's the one topic which is going to be common for the security engineers in
in this load balancing training. So that SSL decryption, that topic is going to be common. So that's one thing. Apart from that, there is a GTM training. I don't know how many of you are already enrolled for the GTM, which is also known as Global Traffic Manager, right? So obviously GTM is totally different than LTM. And in nutshell, I would call GTM as a DNS server. So you can simply call it DNS server. So basically it's kind of like you are managing a DNS server. Now, to understand GTM very well, it is important for all of you to have some knowledge around the DNS. Like, what is DNS, domain name service or domain name server? What it does, right? Like, obviously, we all know that it performs name resolutions, right? So, in most cases, you would access your applications using their names, but in backend, obviously, there is an IP address allocated for that application, right? So let's say you are accessing www.google.com, but in backend there must be an IP address of that www.google.com. So who is going to resolve that, from names into IP address? So that's the DNS, right? So if you want to perform name resolution, right? So obviously it's DNS then. So for that, there is a module called DNS. Earlier it was known as GTM, but now we call it uh, DNS, right? So basically you are going to cover these two modules. First, you are going to cover LTM and then you are going to cover GTM. Now, there are some topics which are common for LTM and GTM, which is obviously the TMOS administration. So this topic, TMOS administration, is common for both of the modules. So when I say TMOS administration, so obviously it will include such as um, allocating IP addresses to your network interfaces, right? Performing routing, right? Then creating ACLs and getting them applied onto interfaces probably, right? Creating VLANs, configuring Ether channel, or you call it link bundling, right? So configuring link bundling is also common. Even configuring high availability like active standby or type of things, right? So that is also common. Apart from that, the system configuration is also going to be common, right? Which is also part of the TMOS administration. So like OS upgradation, OS installation, right? And then downgrading in case if taking backups and then restoring your configuration using the previous backup file, right? So there are many things under TMOS administration, and that is going to be common for LTM and GTM, right? Because understanding TMOS is really important before we proceed further with LTM based training, and similarly it goes with the GTM. If you don't know the TMOS administration, then forget about learning LTM and GTM. It's like if you don't have knowledge of that how iOS works, right? So like on a router, if you don't know that how to use iOS, then forget BGP, forget OSPF. You can implement BGP or OSPF on Cisco routers only if you are aware with that operating system, right? So you should be knowing that which all commands you can use to probably configure your interfaces, or many other things like maybe creating VLANs, allocating IPs to VLAN, and then command syntaxes supports that are supported in iOS. So if you're not aware with that, then you can not really implement OSPF or BGP. But yeah, over here, um, you're going to learn about the TMOS administration first, so that you are familiar that how to work on this operating system, so that you can easily learn the LTM features and of course the GTM features. So that's that. So as I said yesterday, the objective of our training would be to cover some basics of 101. Obviously, I'm not going to deep dive into 101, but yes, I'll touch base the 101 so that in case, obviously you will have to attempt that exam 101. So you should be aware that which all topics you need to cover for 101, right? So I'll touch base the all of the topics included in 101. Even that's what we started yesterday, and today we are going to continue with that. And then there is one another exam called 201, which is obviously for TMOS administration. So that is also something that you can easily attempt upon completing our training, right?
And then third would be 301A, and of course there is a 301B, which is all about the LTM troubleshooting. So forget about that exam for now, unless you have some real-time experience over the load balancers. If you don't have that, then I would not really recommend you to go for that exam for now. You can hold off. I mean, you can hold yourself for taking this exam for now, right? I mean, be on hold and take some, I would say, take some experience in production over the F5 technology, especially the LTM technology, and then go for this troubleshooting exam, which is 301B. But our goal would be like during this training, like post this training, you would be comfortable to take your 101 exam, 201 exam, and of course 301A. 301B, as I said, it's all about the troubleshooting. It's just, I mean, it depends like how much of time you have already spent in troubleshooting, and that will make your exam easier for you, right? So if you don't have like a real-time experience, then obviously I would assume that you would not go through some real time or real time challenges, right, over the LTM. And the exam is all about the real-time challenges, right? So better that if you take some experience first, get some experience over this LTM technology, and then attempt for the examination. Before that, I would not really recommend that. Any questions so far? Okay. I will not take the questions from chat. That's one thing for all of you. You guys are free to unmute yourself at any point of time and you can speak up. It's not like you're just watching the video. So better that whenever you gotta say anything in meeting, you unmute yourself and speak up, right? I will not be looking at chat. It's just I keep an eye on chat in initial classes, like in initial first 1 or 2 classes, and post that I don't even look at the chat. So that's that. Well, let's open up uh, that 101 that we were discussing yesterday, right? So just hold on. This is 101 study material, right? That we were going through yesterday. So I will continue with this only. And whenever like you are comfortable, Shruti and Rohit, yesterday I just went through it, right? So if you're comfortable with any topic, just give me go ahead so that we don't waste our time over there, right? And if Okay, sir. you are not comfortable with any topic, stop me right there and then I will explain it to you. Okay. So that way it would be better for us to cover the 101 because it's just that I am covering it. It's not necessary for us as an organization to cover the 101 because we are delivering here the LTM training, right? And to deliver the LTM training, obviously we are not really you know authorized to deliver the training over 101 exam, right? I would say that. But since you are uh, required to have the basics, your basics, network basics is strong, that's why I'm just going through it so that you have an idea that which all things you have to cover, right? All right. So yesterday I had a discussion like, okay, IPv for subnetting and all, you are all good with that. And then also I talked about the traffic, the packet flow, right? Like how packets are traversing through the layer 3 devices. So we saw that the source IP, destination IP would remain same, right, across all devices, but MAC addresses were getting changed after each and every broadcast domain, right? Then we had IPv6, and then someone from you said that you are not really comfortable with IPv6. So let's forget about this, right? For now, let's not cover the IPv6 for now.
even in LTM training, you would have pretty much, I would say, there's just half an hour long topic for IPv6, like how to create a virtual server using IPv6, or maybe how to allocate IPv6 addresses to your network interfaces over the big IP, right? But you can do that only if you have some understanding of IPv6 format, like how this IPv6 address looks like, right? And how you can really perform the subnetting for, or how you define the prefix list in IPv6 addresses, right? So I mean, yeah, I mean, it's good to have um, good knowledge around the IPv6, but even if you don't have that, that would not be an issue, because I'll be covering that for you. Okay, before I start with that topic, then I will be giving you the description of IPv6, that how does it look like and how you can really represent this. If there are many things, right? Like if you take an example of ARP protocol, address resolution protocol, that ARP protocol is valid only for IPv4, not for IPv6. Then how do we identify the MAC address of the next hop addresses in IPv6? Because there is no ARP protocol in IPv4. We used to have the IPv4 protocol, and that was helping us. In IPv4 protocol, we used to have ARP, right? And ARP was helping us to get the MAC address of the next hop address, or the gateway address. I mean, of the gateway. So there is no ARP in IPv6. So I mean, yeah, it's important for us to understand the behavior of the IPv6. How does this work and all that? So that we can discuss later. But the only thing that you should remember in IPv6 is that first, it is 128 bits log address, as opposed to 32 bits in IPv4. So in IPv4, we had only 32 bits, right? Whereas in IPv6, there are 128 bits, right? So IPv6 address is 128 bits long address. That's one thing. Second, IPv6 address will be represented in hexadecimal only, right? That's the only thing that I would tell as of now. And then obviously, now we are talking about the transport layer here, right? So in transport layer, obviously there is a concept of MSS, and this MSS then impacts your MTU as well, maximum transfer unit. So I hope that everybody is aware, is familiar with MTU, what MTU is, and how can it affect your network functionality, right? In case if MTU is mismatching, or maybe your data packets, that your data packet length is exceeding the MTU size. Questions? Shall I explain MTU, or all of you are comfortable with MTU? Swaroop, please tell something like MMS regarding the MMS. Yeah, MSS is something that I'll be explaining, but how about the MTU? See, MTU is defined at layer 3, right? So basically, not only at layer 3, but also you can say there is a layer 2 MTU, and as well as there is a layer 1 MTU, right? So if we talk about the layer 3 MTU, on most of the devices, by default, it's configured as 1500 bytes. I'm talking about the layer 3 MTU. It's not layer 2 MTU, because at layer 2, obviously, the size of the MTU will get increased, because then Ethernet header will get added, right? So the default MTU size at layer 3 is 1500, which means the length of the IP packet. So when I say IP packet, which means I'm talking about the layer 3 packet, right? When I say Ethernet frame, which means we are talking about the layer 2, we are talking about the data at layer 2. When I say IP packet, which means that we are talking about the data at layer 3, right? So that's something that you should always keep in your mind. Does that make sense? Okay. Yes, sir. So the default MTU size, the layer 3 MTU size is 1500 bytes. Now, when a router or a switch or any layer 3 device which works at layer 3, maybe a load balancer, or it's a firewall or whatsoever, when they receive a packet, right,
and obviously they have to perform the lookup in their routing table for the destination IP address, right? So once they perform lookup in their routing table for the destination IP address, then they will get to know that who is the next hop, right? Or what is the egress interface. And then they will check that, okay, this is the length of the IP packet that I am forwarding, and this is the MTU size of the egress interface. If the packet length of the IP packet is lower or is equal to the MTU size of the egress interface, I'm talking about the layer 3 IP MTU size, right? Layer 3 MTU. If the length of the IP packet is either lower or equal to the MTU size of the egress interface, then you don't have any issues. You will not get any issues, right? The packet will be forwarded as it is without doing any type of fragmentation. However, if your IP packet length exceeds the MTU size of the egress interface, then there will be only two possibilities. One, your device can drop that packet, or it can convert that packet into multiple smaller fragments, right? It can perform fragmentation. So that packet will be divided into multiple fragments and then will be forwarded towards the destination. So fragmentation will take place, right? Now, there could be a question that in which condition in which condition the packet might get discarded, might get dropped if MTU size was exceeded. So obviously, inside the IP header, there is a flag called the DF flag, don't fragment flag. If DF flag is on in the received packet, and if that packet is exceeding the MTU size, then definitely your devices like layer 3 devices such as router switches, layer 3 switches, or maybe firewall, or maybe a load balancer, right, will have to drop that packet. Because see, DF flag is on in that packet. So that clearly indicates that nobody can fragment that packet, right? So if you are not allowed to perform fragmentation, and in case if that packet is still exceeding, like you can fragment it, but it is exceeding the MTU size, then there is no other way, or there is no other solution other than dropping or discarding that packet. Rohit, did you understand what I said? Yes. And Shruti, are you comfortable with the statement that I have just made? Yes, sir. Okay, cool. So that's MTU. But at layer 4, like when we talk about the TCP, right? Obviously, with the UDP, there are no such things. But with TCP, yes, there is a concept of MSS, because we are talking about the layer 4, which is also known as transport layer. So at transport layer, in most cases, you are going to use either TCP or UDP. Like for most applications, it will be TCP. But yeah, there are some applications for which you will be using UDP at layer 4. But yeah, in regards with the load balancers, let me tell you, most of the applications will be using TCP at transport layer. That would be the majority of the applications that will be using TCP at transport layer. If somebody is using TCP at transport layer, then obviously in TCP, there is a concept of maximum segment size. You know what? What TCP does is that I would say that TCP divides your data into the segments. Then obviously the size of the segment needs to be negotiated between source and destination. But ideally, that depends upon the MSS size, the maximum segment size, right? The MSS is negotiated between source and destination during three-way handshaking. Like at the time of TCP negotiation or TCP three-way handshaking, devices like source and destination would negotiate their MSS, maximum segment size. Ideally, it is like I think it's 1460, the default MSS, if I'm not wrong. I think it's 1460, but you can modify that as well. Right? Remember, it is a size of your data at layer 4, not at layer 3. Because if you talk about the layer 3, then obviously IP header will get added onto your
onto your layer 4 data, and then obviously the total length of that IP packet will get increased because the IP header was also encapsulated. So the MSS, right, maximum segment size, it's a concept of TCP. It is negotiated between source and destination during TCP three-way handshaking, right? So when you send the SYN packet, you also send your MSS size that you supports, right? When the other side, obviously TCP negotiation or TCP connection needs to come up between source and destination, right? So when destination responds back, that will also provide the MSS size, right? And remember that the MSS field value to be used is largely determined by the maximum transfer unit of the interface that the peer are directly connected to. So the source MSS size will be depending upon the MTU size. Like TCP will see that, okay, what is my MTU of my egress interface, right? Because MSS must not exceed your MTU. If MSS is exceeding your MTU, then obviously your device will always have to perform fragmentation then. And that's why we have this negotiation type of concept during three-way handshaking. Like in case if the MTU was changed, then let's have a negotiation in between the source and destination so that source can look at its MTU size and then can offer the MSS maximum segment size, right? So MSS must be lower than MTU because MSS is applicable for layer 4. So first, like obviously if data is getting started from application layer, then it will go to transport layer, and a transport layer either TCP or UDP. So if we talk about the TCP, then TCP will be responsible to encapsulate that, and then it will be given to the network layer, and then again there will be an encapsulation done at network layer, which means that IP header will get added to that, right? So obviously the MSS maximum segment size must be lower than the MTU. If you're not following same, then remember one thing, that your layer 3 device will keep doing or will have to perform fragmentation. And there's a problem with fragmentation. It's not a good sign. I mean, it's not a good architect or it's not a good design if fragmentation is happening in your network. You should design your network in such a way so that fragmentation is not needed at all. That's how you should design your network. And that's where all these things comes into the picture, right? You should design your network in such a way so that there is no need of fragmentation. Because if fragmentation is happening, obviously the device who is doing the fragmentation will add some latency to that. Its utilization, CPU utilization will get increased. And also at the end of recipient, who is actual receiver of the data, will have to reassemble that. And again, some latency will get added, right? Some extra overhead will be created. Like for example, if you broke your one packet into 5 pieces, so then 5 external IP header will be added. So obviously one was already there, but then 4 more or 4 additional IP headers will get added. So some additional amount of data will also be added in your network, right? Which might affect the performance of the network, right? Or maybe which might affect the bandwidth utilization. So it's not a good idea actually to have the fragmentation in your network. So we should always avoid fragmentation, right? Now to avoid that, you just have to make sure that MSS is not exceeding your MTU size, or your IP packet length is not exceeding the MTU sizes. I don't know how many of you have already worked in MPLS, and so like in MPLS, we increase the MTU sizes. Instead of 1500, we make it 1504, sometimes 1508, and sometimes 1512. That depends that how many labels are getting added into the label stack. So if there are 3 or more, 3+ labels, then obviously you will have to set it up higher than 1512. So that depends. So but what we do is that we try our best not to perform fragmentation in the network.
So fragmentation must not be happening. In that way, you should design your network. So that's the whole point. So TCP and MSS. So you could see that the TCP protocol is designed to limit the size of segment of the data to a maximum of number of bytes. The purpose of this is to constrain the need to fragment segment of the data for transmission at the IP level. The TCP MSS specifies the maximum number of bytes that TCP packet can have, right, or can contain, and it refers to the maximum amount of TCP data in a single IP datagram that local system can accept and reassemble. A TCP packet includes data for header as well as the data contained in the segment. So it will also include the TCP header, right? If the MSS value is set too low, the result is inefficient use of bandwidth. More packets are required to transmit the data, right? An MSS value that is set too high could result in IP datagram that is too large to send, and that must be fragmentation. So fragmentation can occur, right? Typically, a host bases its MSS value on its outgoing interface MTU size. So that's how it decides the MSS, right? So TCP supports like connections. Obviously, it is a connection-oriented protocol. I don't really have to explain you that what is the connection-oriented protocol, right? I'm expecting that you are well aware with the TCP, right? So full duplex operation, then error checking it supports, sequencing it supports, because sequence numbers are allocated to each and every segment that you are transmitting over the TCP connection, right? Then acknowledgements are always given, right? Whenever you send a segment, sender must receive an acknowledgement back from the recipient host, right? Then flow control it supports, right? So if the sender is overflowing the receiver by transmitting too quickly, the receiver drops packet, and failed acts alerts the sender to slow down or stop sending. Obviously, that's what happens in TCP. Then packet recovery services, right? So the receiver can request retransmission of a packet. Also, if packet receipt is not act, the sender will resend the packets as well. That's how TCP works, right? Like it supports retransmissions. So how does retransmission takes place? Like for example, if sender transmitted a packet, a segment using TCP, if there was no acknowledgement received in response, right? Because in TCP, it is mandatory for a sender to receive an acknowledgement back post sending any segment. So if sender has sent a segment, then sender must receive an acknowledgement back, right? If it doesn't, then it will perform some retransmission, and for that there is a timer called retransmission timeout, right? So once retransmission timer gets expired, and within that time period, if acknowledgement was not received, then of course um, your uh, your sender will perform the retransmissions, right? So I mean, it all depends how your network is behaving and all that, but these all are the features of TCP. So I'm expecting that everybody on this call is comfortable with the TCP, and if whenever you see or you find some difficulties in understanding anything, then just do let me know. I can explain it to you. Now, three-way handshaking. I'm pretty sure that all of you are aware with the three-way handshaking in TCP, like SYN, SYNAC, and then ACK for connection establishment. And then in similar way, basically the connections are terminated by TCP, right? FIN, ACK, FIN, and then finally ACK. It's kind of four-way handshaking to close out any connection, right? By sending the FIN packet. UDP is pretty much straightforward. You don't really have to put a lot of efforts in understanding the functionality of UDP as compared to TCP, because TCP had so many different features, right? So many different features. But in UDP, we have like kind of a fixed size of the header. That's one thing. Like the header size of the TCP could be in between 20 to 60 bytes, which is variable, but in the increment of 4 only. So the minimum header size in case of TCP would be 20 bytes, but then it can get incremented in the increment of 4, like 24, 28, 32, like that. But in UDP, you got a fixed header size, which is 8 bytes long header, right? So in UDP, basically,
the header size would remain static, right? It's not dynamic, right? So the header size in UDP is going to be 8 bytes long, right? That's one thing. Second, in UDP you don't get any acknowledgements. In UDP you don't build any logical connection, like you don't perform kind of three-way handshaking. UDP doesn't perform that, right? UDP is like a faster protocol as compared to TCP, because what it does, as soon as it receives data, it forward it onto the network, right? As soon as it receives, it will forward the data onto the network. Simple as that. So now remember, in TCP and UDP both, you got a concept of the port numbers as well, and that I am highly expecting that you must be aware with those port numbers. So when I say those port numbers, which means you must be knowing that all the port numbers belongs to in range of 0 to 65535. That's the range of port numbers, right? Whether you talk about TCP or you talk about the UDP, those are the port numbers that could be utilized, right, in between 0 to 65535. Now some of them are well-known port number from 0 to 1023, and then we have like after well-known port numbers we have what to say, some sort of like type of public port numbers, which are again assigned to different services from different vendors, right? But those are not really well known port number. And then finally you would get a private port numbers, like anyone can use them, similar to like kind of IP addresses. So that way your port numbers are divided, right? So we have some well-known applications. For all well-known applications, you would have well-known port numbers. But if any application, or if any service is a vendor-specific service, vendor-specific application, then there will be a vendor-specific port number. So, I mean, that port number will be for that. I mean, basically, let me display something here, because that thing is not really explained here in more details, but let me show you something here in regards with the port numbers, please. So on Wikipedia, you can get all this information. So you can see that we have a list of TCP and UDP port numbers. So there are well-known port numbers, right? So from 0 to 1023, those all are well-known port numbers. And then we have registered port numbers, which are from 1024 to 49151. These all port numbers are registered port numbers. And then we have dynamic, private, or kind of like you can call them either dynamic port numbers or private port number, or I mean, these all are from, I mean, your private port numbers are from 49152 to 65535. So if you are deploying any application internally, right, in your data center, then you can use any port number out of this list, right? If you want a registered port number, then you will have to get it reserved through the INA. They are assigned by INA, right? Okay. These are the well-known ports which are assigned to the well-known applications, and well-known applications are those applications which are supported by all vendors. Like there is an application called HTTP. Now HTTP is supported by everyone, right? Whether you talk about the Windows operating system or Linux or whatsoever. You take an example of any operating system, they all are supporting HTTP. Like FTP is supported by all, right? DSCP is supported by all, right? DNS is supported by all. So these all are the well-known applications or well-known protocols, right? So for all of them, we have like well-known port numbers. So these all are the well-known applications, and for all of them, we have well-known port numbers, right? So when it comes to the well-known port number, again, there are like some official, unofficial, assigned, no, reserved. So you should be knowing that,
right? So if it is yes, describe protocol is assigned by INA for this port and is standardized. If it is unofficial, describe protocol is not assigned by the INA for this port, but is standardized and is specific or widely used for such. Assigned, describe protocol is assigned by INA for this port, but is not standardized. So you should be knowing that. So that's the information which is also listed out there, right? And any application can use TCP or UDP, right? So for example, if DNS is using UDP, but DNS can also use TCP, right? In different scenarios, DNS can use different transport protocol. So you should be aware that which application is using which protocol at transport layer, right? Like HTTP will always use TCP by default, right? DSCP will use by default UDP. DNS will use TCP and UDP both. So in most cases, it will be using UDP, but at some specific, like for some specific task, it will be using TCP, right? Then SSH, Telnet, all these protocols are using TCP, not UDP. Okay. So then there should be a what to call NTP, network time protocol. I think it's 123 or what? Yeah, 123. So NTP uses UDP 123. So you should be knowing that which service is using which protocol and port number. We should be comfortable with this whole list. I mean, especially all the well-known protocols, we should be knowing that which port number is used by whom. So then after 1023, they're talking about the registered port numbers, right? So these all are the registered port numbers from different vendors. These are different services, right? OpenVPN is using 1194. Khaza is using 1214, right? VLC, and then SCOM, which is System Center Operation Manager, right? Which is a Microsoft service, right? So these all are there. Some protocols are from IBM. I mean, there are many vendors. So for different vendor, we have different applications for those vendors, and then they have different registered port numbers. So you could see that. So we must be aware with all this stuff, right? So the UDP, obviously the header size of the UDP is like 8 bytes long, and therefore it can contain more data than TCP. That's something that you should always keep in your mind. And since it doesn't wait for any acknowledgement, so obviously it's faster than TCP. It doesn't it doesn't perform any three-way handshaking. So that's what makes it faster than UDP. Than TCP. So UDP is faster than TCP, but the point is that UDP does not gives you reliability. So there is no reliability at all. Okay. UDP does not provide any reliability, which means that in case if you transmitted something using UDP, but if that was not delivered successfully or somehow you were not, I mean, obviously, let's assume that it was not delivered successfully. So how would you or how sender will come to know that whether it was delivered successfully or not? So obviously there is no way to identify that. Right. So obviously it is a 100% unreliable protocol. It's not a reliable protocol. You don't get any acknowledgements, right? Any questions? So in TCP,
MSS, like how the data is resemble at receiver end, like sequence number is given during the fragmentation. Yes, sir. So So each segment will have its unique sequence number, and then using that sequence number only, the recipient host will be able to assemble the data back. okay, or any packet missing, or then there If is a something name is to. missing, then there are two things. One, that sender can send a request, sorry, the recipient host can send a information to the sender that, hey, this sequence number is missing, can you retransmit it to me? Or even sender can retransmit the segment if no acknowledgement was received Okay. for a specific sequence number, right? What sender does, like in case of TCP, let's say if it is sending a segment, it will keep a copy of that segment in its cache until it gets an acknowledgement back. If acknowledgement was not received, then obviously it will retransmit a copy of that packet then. I mean, when I say packet, which means I'm talking about the segment, because we are talking about the TCP layer 4. So ideally, UDP will be used for real-time data actually, because when we talk about the real-time data, which means that if it is getting delivered, then it should get delivered in real time. If it is not getting delivered, then forget about it, right? Because in real, like if you are watching a cricket match live, right, then obviously something happened, something broke, and if that gets restored, so shall we start seeing the cricket match from the point when it was broken, or we should be watching live? So obviously we should be watching live, right? So there is no point of using TCP then. Use UDP. So as I said, if you have a real time data, then use UDP. Like for audio, we use UDP because there is no point of using TCP, right? For voice data, right? For audio, um, like for example, if I'm asking somebody that, hey, can you meet me right now in my cabin, right? I called up someone, right, and asked that, hey, can you meet me in my cabin immediately? Now, if you are not using UDP, let's say you are using TCP, and at that time something happened to the signal, right? But then that your voice, right, was delivered to the destination, let's say after 5 minutes or 10 minutes, right? But finally it got delivered. And after 10 minutes, it says that, hey, can you meet me in my cabin immediately? So basically you will be going to that cabin after 10 minutes or 20 minutes or an hour or whatsoever, right? I mean, it depends like how much time TCP took to deliver that information to you, right? Point is, I mean, it's just an example. Don't think that it happens in the product. It can happen in the production environment. No, I mean, it's just an example of differentiating TCP and UDP from each other, right? So obviously there is no use of that information then. So if something like is reliable, like TCP gives you reliability, but then in case of voice traffic, if voice traffic is coming late, then that becomes useless, right? So obviously we should not be looking at the reliability. What things we should care about for voice data is that it should get delivered with the speed immediately. That's what should happen. So as I said, for real-time data, whether it is a video streaming or it is a audio, maybe you are making a audio call, so we should prefer UDP over TCP, right? So yeah, that's that. Then protocol numbers and port numbers, you should be aware with that, right? So the protocol number and the port numbers. I am not sure how comfortable you are with those terminologies. So there are mainly two terminologies, right? And we must be aware with both of them, right? The one is port number. The other one is protocol number. And you should be aware with the differences in between them.
right? The port numbers, the range of the port number is from 60 to 65535, whereas the range of the protocol numbers is from 0 to 255 only, right? The port numbers are assigned, like if you talk about the port numbers, right? So port numbers are assigned to all those applications which works at application layer. So if you see an application working at application layer, will always have the port number, either TCP port number or UDP port number. They will always have the TCP or /UDP port numbers, like they will have port numbers. But if there is any protocol working at layer 4 or layer 3, they will always have the protocol number, such as, let me give you a couple of examples. If you talk about the TCP uses IP protocol number. Tell me, what does it use? IP protocol number 6. And UDP uses IP protocol number 17, exactly, right? So and then you can keep taking examples like OSPF or maybe EIGRP, maybe GRE, maybe ESP, right? So all these protocols are using IP protocol number, because these whole protocol works either at layer 4 or layer 3. So all the protocols which are working at layer 4 or maybe layer 3 will always have an IP protocol number, right? Or I would say, in nutshell, or in other words, I can explain it in this way. See, if there is an application who interacts with TCP/UDP, like HTTP will always interact with TCP or UDP, right? So all these applications or protocols which are interacting with TCP or UDP will always have the port numbers. But if somebody is interacting with IP directly, they will always have protocol numbers. So if you take an example of HTTP at application layer, it is going to start, then HTTP will hand over its payload to whom? TCP, because it uses TCP port number 80. Then TCP will hand over its data to the IP, because TCP uses IP protocol number 6. And then further, it will be given to the Ethernet, like Ethernet will be performing encapsulation, right? So that's that. So we have HTTP, we have TCP. So for all the protocols which are interacting with TCP or UDP will have their port numbers. If there is any protocol who is interacting with IP, will have IP protocol numbers. Now you can take any example, whether you take an example of TCP, UDP, maybe if OSPF, you know that OSPF directly interacts with IP, so therefore it will have IP protocol number. Same goes with EIGRP, right? EIGRP as a protocol directly interacts with IP. Same goes with the GRE. GRE directly interacts with IP. Same goes with ESP, which directly interacts with IP, right? So they all will have IP protocol numbers. You must be perfectly fine with all these things which I have discussed with you. Even like it will help you to perform troubleshooting in production environment, but also it will help you to clear your interviews, and also it will help you to clear your exams, and also it will help you to perform troubleshooting in the production environment, and of course to make the deployment. Now in TCP, timeout and retransmission. So obviously, as I said, that when a sender sends a segment, a retransmission timeout timer gets kick off, and as soon as it gets expired, sender will retransmit that segment. But before that, retransmission timeout must get expired, right? So transmission control, right, provides a communication service at an intermediate level between an application program and
an internet protocol. It provides host-to-host connectivity at the transport layer of the internet model. An application does not need to know the particular mechanism for sending data via link to another host, such as the required packet fragmentation on the transmission. I mean, you can read this information if you want, but I've explained you things now. You must have heard about the TCP flags. If not, please go through them and make sure that you cover each and every flag of TCP, because all flags in TCP are equally important, but most of them would be SYN, ACK, FIN, reset, right? These are the one most important, right? These are the one which are most important. We really talk about SYN, ACK, FIN, reset. So you should be aware that when TCP is going to use which flag. So all the get comfortable with all of the TCP flags. And if you get any issues, do let me know. I will explain it to you, right? So obviously everybody on this call should be comfortable with the SYN, SYNAC, ACK, that three-way handshake. And at that time, it uses those flags like SYN and ACK, right? And then there is another flag called reset, right? This is one another flag supported in TCP. And this reset is this reset flag or TCP connection is resetted. Sometimes you would see that it is a problem, right? I mean, you are doing troubleshooting, and then you have found that your connection is getting resetted. You're getting reset from your neighbor or from destination host. So, which all could be reasons behind sending the reset. Do you have any idea about that? What could be the reason in the network behind receiving reset in TCP? Has anybody experienced this before in production environment, that we are getting reset? No? I mean, I mean, if you guys are working, and I do not really think that you never observed or you never found getting resets in the network, because it could be due to any reason. There could be a firewall, there could be a proxy, there could be a maybe you are doing too much retransmissions, then recipient host, if there is a receiving host who is getting too many retransmissions, then it could also reset the connection. So resetting connection is just that, hey, I'm going to reset this connection. I don't want to use it, right? So that's what it does. So it just resets the TCP connection. So you can get the reset due to multiple reasons. As I said, it can be given by the firewall. Firewall could reset your connection. The proxy could reset your connection. Or maybe there was too many retransmissions. If there are too many retransmissions, then again, TCP will reset that connection, right? Also, if you are sending, like from a sender point of view, if you have sent a segment, but you're not getting acknowledgement, you retransmitted it. Again, you did not get any response. Again, you retransmitted. So obviously there must be a maximum limitation or maximum number of retransmissions that a sender will do. Still, if it doesn't get any response, if it doesn't get any acknowledgement back, then it must reset the connection. Describe various TCP options, right? So you can go through it under TCP options, like MSS is also part of the options, Windows scaling, padding if needed, right? So it's all part of the TCP options, or selective acknowledgement, also known as SAC or NAC, timestamp, right? So that is all part of the TCP options. The checksum error, obviously, error detection is also done at transport layer, right?
So flow control is also supported by TCP, which I have already explained, right? The congestion control is also supported by TCP, right? It's a main aspect of TCP, you know, one of the main aspect of TCP when I say congestion control. So TCP uses number of mechanisms to achieve the high performance and avoid congestion collapse. The network performance can fall by several order of magnitude. These mechanisms control the rate of data entering the network, keeping the data flow below the rate and would trigger collapse. They also yield an approximately max minimum fair allocation between flows. Senders infer network condition between TCP sender and receiver use acknowledgements for data sent or lack of acknowledgements, right? So you can read that. So sender employ a retransmission timeout that is based on the estimated round trip time between the sender and receiver, as well as the variance in the round trip time. The behavior of this timer is specified in this RFC, so you can just go through that, right? So that's called congestion control. Now, after like transport layer, right? After transport layer, they're talking about the application layer because that's what matters a lot, even in load balancing, right? So you should understand your protocol at application layer as well, right? Like what kind of things they want at application layer, because load balancer is not a router, or it is not a layer 4 firewall that you go and allow your data and that's it, you are done. No, it's not like that, right? It works on a full proxy model, right? The load balancer, the big IP LTM, will work in full proxy mode. It follows the full proxy model, although it depends upon the configuration that how you have set up your load balancer. But again, in most cases, right, in most environments, it will be working in full proxy mode. So when I say full proxy mode, which means that it can work at layer 7 as well, at application layer. If this device can work at application layer, which means that you should have the application layer level information, right? Because sometimes you may have to modify within the HTTP, right? Like the client has made a HTTP request that is getting delivered onto load balancer. Now on load balancer, you wanted to insert or you wanted to remove something from that request. Like you wanted to modify the HTTP request, or maybe you wanted to modify the HTTP responses. So that can be done on the load balancer, as load balancer works in full proxy mode, which means that load balancers can work at layer 7, or I will call them application layer, right? So you should be aware with the HTTP protocol. So remember that HTTP is used to access your web applications, right? And it works based on the client and server, client server model. Like client will always be responsible to make the requests, and server will always be responsible to make the responses, right? So in HTTP, like the one will be client, the other one will be server, right? So it will follow the client server computing model, or sometimes we call it request response model, right? So one, which is client, will send the request, although there could be different types of request, but yeah, the client will have to initiate the request, and then server will provide the response back. All of the web applications will be using either HTTP or HTTPS. Now, the only difference between HTTP and HTTPS would be that in HTTP, the traffic will travel in plain text format, whereas in HTTPS, your traffic, your data, your HTTP data will travel in encrypted format. So we don't use just HTTP, we use HTTPS in most cases. Now, nowadays, 99.99% websites or web applications are protected by HTTPS. So we don't use HTTP anymore. You would see that
99.99% web applications are using HTTPS nowadays, not HTTP. But again, even if you are using HTTPS, the only difference is of TLS or SSL, I would say, but rest is same. Like obviously in HTTPS also you would have like client server model, right? Client will always make the request and server will have to provide the response back. However, those request and response, those transactions would happen or would be done securely in HTTPS, right? So like we should be aware that how HTTP works, like especially if you guys are comfortable, then I would recommend you to go through probably like if you are accessing this website or google.com, then you should capture the data. You should try to analyze your packets. Try to capture your data and then you should try to analyze that data. That is very important, right? So if you understand that well, then, and especially I would say that try to access any website which is not secured by the SSL, then only you would be able to understand the actual uses of HTTP or actual functionality of HTTP. Because if you are using HTTPS, then it is not going to display you everything which you should look at, because all the packets will be encrypted by SSL or / I would say nowadays we use TLS, not the SSL anymore, right? So in HTTP, basically there are a couple of versions. First of all, so first it was 1.0 that they launched in 1996, and then 1.1 was launched right later on. So 1.0 had so many different issues, and therefore 1.1 was launched. And even today, 1.1 is the most common one, the HTTP version that we use in production environment. But also there is a HTTP version 2.0 that has already been rolled out, right? So you would be seeing either HTTP 2.0 or 1.1, not 1.0. 1.0 is not in use anymore. It had so many different issues. So if somebody talks about the HTTP versions, so you have mainly 3 versions: 1.0, then you have 1.1, and then you have 2.0. Now there will be a question that what are the differences in between them, right? So let's talk about the 1.0. So in 1.0, like obviously these questions, people might ask you this question during interviews only. I don't really think the other use case of that. But yeah, you should be knowing that what are the differences between HTTP 1.0 and 1.1, and then definitely between 1.1 and 2.0. So in HTTP 1.1, and if we talk about, or we compare 1.1 with 1.0 or 1.0, right? So obviously 1.1 has many advantages over 1.0. One of the most important advantage of using 1.1 over 1.0 was the feature called keep alive feature. So in 1.1, the keep alive feature was added in HTTP. Before there was no keep alive. So in 1.0, there was no keep alive. And since there was no keep alive, so what was happening in 1.0, that let's say you needed to send a HTTP, like you needed to perform an HTTP transaction, right? So for that, obviously you will send some request and then you will get some response. So that's called one transaction, like sending request and receiving a response back, called one transaction. So for each HTTP transaction, there was a need of a TCP connection. Like for example, if you wanted to perform HTTP transaction, so first TCP connection will come up, then your HTTP transaction would happen, and then that TCP connection will go away immediately, like it will get deleted automatically. And obviously there could be a requirement of multiple HTTP transactions. So to perform another HTTP transaction, again TCP connection has to be established.
then HTTP transaction would happen. Again, TCP connection will get closed. So it was adding so much of latency. There was too much delay to load any application. To fix that issue, they came up with HTTP 1.1, and in 1.1, they basically came up with keep alive feature. Let me just display you that. Like this. So in 1.1, we had this keep alive feature. So in this, what happens? You send the SYN packet, SYN ACK, then you send, let's say, request, then you get the response. But with request, you send the keep alive message. So you don't close this connection now. So you are performing multiple HTTP transactions over a single TCP connection, and that's called keep alive feature. That is possible. So you have like multiple requests, whereas you're using single TCP handshake. Earlier, it was not possible in 1.0 or in 1.0. Like for each HTTP transaction. So when I say HTTP transaction, which means sending a request and getting response back, that is equal to one HTTP transaction. So for each HTTP transaction, there was a need of a separate TCP connection. But in 1.1, they launched this keep alive feature, and that's not needed or that's not required anymore. So now you can perform multiple HTTP transactions over a single TCP connection. That's the beauty of, that was the biggest advantage of 1.1 over 1.0. Right? Obviously, there was a difference of HTTP headers as well. Like if you deep dive more into the differences, you would look at the HTTP, I would say, request methods. So in HTTP 1.0, you had only 3 common methods supported in 1.0. Those were get, head, and post. Those were only 3 different types of methods supported by 1.0. But then later in 1.1, they added many more methods. So if I talk about those other methods, those are like delete, put, right? There are many others. Oh, come on, where is that? They're not talking about the request methods. Yeah, there is. So in 1.0, you had only get, post, and head, whereas in 1.1, they added 5 new methods: options, put, delete, trace, and connect. Obviously, it was supporting the previous one as well, like get, post, head. Like 1.1 supports get, post, head, then options, put, delete, trace, and connect. These all are the different request methods. Now, you would say that why do we have these different request methods? Okay, let me tell you that why do we have like multiple or different types of request methods in HTTP. So being a participant, let's say you purchased this course, okay, from I-Medita, like, okay, we need training over F5 LTM. So then you called up the support staff and said, hey, I need the ebook or these slides. Okay, now you need some information, right? You needed some information. You wanted to get something from I-Medita. So for that, you have get method, right? Then you said, maybe there could be another requirement. You said that, hey, looks like that you have entered my incorrect email ID. Looks like that I am not getting email. So you would make a request, you would make a call to the support staff, will say that, hey, can you, or you can, or I would say, you would call help desk that, can you enroll me? Like, this is all my details. This is my name. This is that. And can you please enroll myself?
So you will be posting some information to the I-Medita support team, and then I-Medita support team will be creating an entry accordingly. So that's post. Post is like giving some information to the other party. Get is to get some information from the other party. Post is to provide some information to the other party, and then other party will provide the response back based on that provided inputs. Right? Then put is there. Put, like, is to being a participant, you can call help desk and can say that, hey, can you update my number or maybe update my email ID? So then you will be using put. Sometimes you may say that, hey, I'm not interested in this course, in this training at all. Can you please delete my entry or delete myself from that course? So then you will be using delete method. So being a client, you may have different requirements, isn't? And that's why we have different request methods in HTTP. So for different purposes, HTTP has different methods. Request methods, I would say, different request methods. They have a request method called get. They have a request method called post. HTTP has a request method called head. HTTP has a request method called options, put, delete, trace, connect. These all are different request methods. But look at the differences between 1.0 and 1.1. Right? So at a different time, in different scenarios, different HTTP request methods will be in use. Most of the time you would see get. You get my point? Most of the time you would see the get method in place, because you would try to get some information from the application servers. Do you have any questions, concerns? Fine. When you send a request method, or when you send a request to the server, like being a client, you made a HTTP request, and then, obviously now it's server's responsibility to provide the response back. So when a server provides a response, then a response code must be, so when I say response code is also known as like a status code, right? So when a response is given back, so response code will always be there, like this. So this is called a status code or response code. You should be able to interpret the response codes. So the status code of the HTTP response can start with 1, it can start with 2, it can start with 3, it can start with 4, it can start with 5. If the status code in HTTP responses is starting with 2, you should be some sort of happy, because it indicates that it was provided successfully. So like, for example, if it is 200, okay, so 200 is starting with 2, right? Which means it's all good. 404 not found indicates an error on the client side, client part. Maybe client made an incorrect request, which does not exist on the web server, right? So if the status code is starting with 4, it indicates the client part problem. If a status code is starting with 5, that would indicate that it is a server side problem or server's part problem. You get my point? If some redirection is happening, because obviously you would learn this over the load balancer, because sometimes we use load balancer to perform redirection as well. So then a status code would be starting with 3. These are the well-known or most common status codes. 200, okay. If your transaction was successfully completed and you have some response returned in message body. 301 moved permanently, 302 moved temporarily, 303 the resource has moved to another URL,
403 forbidden, the valid request, but server is refusing. 404, the requested material or resource does not exist on the destination server. 500, internal server error, maybe some errors were occurred at server level. The server is currently unavailable, then it will provide 503, or maybe it's overloaded, or maybe it's in maintenance. This is temporary state in most cases. Any concerns, questions? Please go ahead and ask your questions. Sir, can you explain 303, like how it works exactly? I mean, you would be seeing them at the time of performing redirection. Like sometimes you would define that, hey, if somebody is trying to hit www.facebook.com, they should be redirected to www.storypage.com. That is our internal URL. You got my point? Okay. Yeah. So you would be seeing that. Don't worry. You would be performing them. But these are the status codes, right? I mean, that you may get in your HTTP responses. Now try to read about the HTTP in more details. It's not the end of HTTP. So you could see like get method, as I explained, get if you want to get something. Head method will be mainly used for the monitoring purposes. This head method will be used for monitoring purposes, like where, for example, I just wanted to check if this resource does exist, but I don't want to load it. Because see, if you are using get method, if that resource does exist on the server, then server will provide the HTTP response, and in a HTTP response, it will also provide you the data. Now, what I want to check if that resource does exist on the server. That's one thing. Second, I don't want to load that data. So instead of get, then use head method. So that in response, it will give you only HTTP header, not message body. Because in message body, you will get the actual data. So ideally, this head method is useful for the monitoring purposes. Okay. It's same as get. The only difference would be in response to the get, you will get the actual data if it does exist. In case of head, you would get only HTTP header in response, not the message body, not the actual data. But it will give you the response code. Like in the, let's say you used head request method. So in response, you would get a response code which is consisted by the HTTP header itself, right? But it will not be containing the message body. Now try to read about this HTTP in more details, please, because most of the time you will be playing around the HTTP only in case of the load balancers. Seriously, trust me. I mean, you are not going to deploy the applications which are based on FTP, SFTP. You may have some requirements for deploying the SFTP based applications sometimes, but those are very few cases, right? Like out of 100 times, 99.99% you would be deploying the web applications on your load balancers. There will be a 0.1% possibility that you would be deploying some other services, but most of the time you would be deploying web services only or web applications. And to understand the web applications, then yeah, I mean, you should be aware with this HTTP functionality. The post method, as I said, if you want to provide some information to the server to process it and then provide you a response back, that's what post does. So post provide a set of data to the server that server needs to process, and whatever server gets in the output of that process, right, or processing, then that output should be given back to the client. Like for example, I mean, it is just an example that I'm giving you, right? You had a application, web application, where you get a lot of data, a lot of entries are there, but you wanted to filter them out now. So from a client, you applied some filter that I want to see the data only in between this time frame. So you are putting some data there as a client, and you are providing that data to the server that needs to be processed by the server, and then only that output will be given back to the client machine. So if you are providing some information from client to the server, you would be using post. And then of course, whatever whatever server executed, then in response, it should provide that information
back to client. You get my point? So this is post method when you are providing some sort of information to the server itself. That's that. And then there are many others, like obviously then there is a there are some other methods as well, right? As I displayed them to you. For example, if I go back, then they are talking about the DNS. I don't really think that I need to explain DNS. I'm expecting that you are pretty much aware with DNS and all that. But in case of HTTP, like you could see that then there is a put. Put is to update something, right? Post was to provide a complete information. But if you are trying to update something, if there is an existing entry and then you are trying to update that, then you will be using this put method. Delete is to delete something. But most of the times you will be using this get, post, and head. Like these are the most common methods. But these are also another HTTP methods. So for different purposes, we have different request methods used in HTTP. And this is really important. Like especially this status code. You should try to read them, or you should try to learn them like this. Like, okay, if a status code starts with 1, then it indicates this. If it starts with 2, then it indicates this. If it starts with 3, then it will indicate this. So that way you can read it, and then keep it remember. Now, what I will do to explain it in more details, or to make you more comfortable with this process, I would perform some capturing on my local laptop, and then we'll display you that, hey, look at this, that this is how the HTTP transactions are happening. So we will try to access a website which is not using HTTPS, so that we are fully aware with the HTTP process. Because as I said before, the only difference between HTTP and HTTPS is that the HTTPS, right, it establishes a secure connection using TLS, whereas HTTP is not a secure protocol. It does not use like SSL or TLS, right? It just sends data in plain text format, and that's what you would be seeing. Okay, so that I will explain in next week. Then now I request you to go through all these basics by your own in more details. Read about SIP, how does this work? Read about FTP, how does this work? Read about DNS, that how does this work, right? All these well-known application protocols, you should be aware with that. Even read about SSH, because SFTP, now we don't use FTP anymore. Even it is part of the content, but we don't use it in production. Instead of FTP, we use SFTPs, SFTP server. I don't really think that you ever heard about the FTP servers anymore in the production environment. There are a couple of things there are a couple of scenarios where you could see the FTP servers, but now everything, like all the FTP servers have already been replaced by the SFTP servers due to security reasons. So in most cases, you would be seeing the SFTP, not FTP. And SFTP works on top of SSH. So you don't need to learn anything about the FTP then, because all the connections will be made up on top of SSH. And then SMTP, read about SMTP, that how SMTP works, right? The function of SMTP. Then you should be aware with HTTP cookies. Like in HTTP, there is a concept of cookie as well. And this cookie is very useful, especially when it comes to the persistence. We will be using this HTTP cookie for the web applications, right? That's that. The name resolution process, which is DNS, you should be aware with that. The URL, what is URL, right? Now, URL is also divided into multiple components. Like there will be a component called host component inside the URL. Then you would have a URI, and then further URI is divided into multiple components like query, and like that, right? So you can also divide the URI into multiple components. So you should be aware that what is URL, what is host portion. Like for example, if I am visiting like this portion, right? So if you look at that, this entire stuff is URL, right? But then this portion en.wikipedia.org is called host portion, and this is URI from /wiki until non-pods. This is called URI. So we should be aware to break down the URL into further
into like host portion, because sometimes you would see that on load balancer, if you are doing redirection, sometimes you would be redirecting only URI portion, and sometimes you will be redirecting only host portion, right? So you should be aware that, I mean, what is what, like which portion is the host portion inside URL, which portion is the URI portion. Okay. So that's that. So that's what they have explained here. So read about it as much as you can, and then they are talking about the F5 solutions and technology that we have already discussed, but yeah, I'll go through it once again quickly, and yeah, thereafter we will go for the deployment. Okay. And we would be talking about the proxies and all that as well, like what is proxy, how does this work, and what is full proxy, what is half proxy, what is forward proxy, what is reverse proxy. So we should be knowing about those terminologies, right? Because load balancer, the LTM is also known as reverse proxy. Like all the load balancer, not only from F5, all of the load balancers that you see in the world are also known as reverse proxy. So sometimes when people says reverse proxy, then think about the load balancer. All right, I think I'm going to stop this session now, right? If anybody has got any questions, please go ahead. Do not hesitate in asking questions. Next session में करने वाले हो आप regarding that packet capturing, how it exactly works? Yes, of course. Okay. Like we will be using Wireshark to capture data, and then we will be analyzing the HTTP transactions. Okay, sir. And not only that, but also we will be seeing the TCP three-way handshake. Maybe we can try to see reset. So we will analyze that as well. And encapsulation and decapsulation, like sender will always perform encapsulation, a recipient host will perform decapsulation. So we should be aware that what is encapsulation, what is decapsulation, what all information IP header contains, and read about it as much as you can. What all information Ethernet header contains, what all information TCP header contains, what all information UDP header contains. So read about it. See, what I have observed, like from my personal experience, working on load balancer becomes easier as much as you are comfortable with the basics of the networking, especially this OSI model. Troubleshooting becomes easy. Deployment of the application becomes easy. Everything becomes easy if your basics are really strong. All right, I will stop screen share now.